Megha, Purvi, Mubasir, good morning. Nishant, Rajendra, Sayed, Priyanshu, good morning. Chalchala, Shantanu, Polami, good morning. Good morning to all. Brajesh, Ram, Ronak, Shivaji, good morning. Himansha, Pragati, good morning. Brajesh, Akshaya, Shubham, Abhishek, Sujit, Preeti, good morning and welcome. How was your homework? So I was just looking at what you have submitted. More or less, it's all done. But then the fact is, as you are doing it, can I expect you to practice it more? Practice करेंगे अभी तो first time बनाया है. People who started making it, you have made it for the first time, all those things. And are you gaining confidence or not? And just by drawing those things, are many concepts getting down better? True or not? So I've always believed, in the education system which we got from our school and our colleges also, which somehow I believe that commercial teaching at times sort of ridicules, at times says that those were not the correct ways, these are the ways. I think those were the ways where the teacher had certain things in his or her mind. They had a curriculum in their mind. They had a way in their mind. They could anticipate certain challenges and they would expose the child, the learner, the student to those challenges. And the more we played with those challenges, they made them like small little exercises. The more we did them, the more confident we became. And one amazing thing which they did was repeat, repeat, repeat. And I guess repetition has led to a lot of retention. True or not? Do you still remember from your school much more than college? Because college, that repetition was removed. So today I broke my integrity due to important work, not attending, and I also could not complete our homework, but sir, today I'll complete it. Okay, sir, perfect. Do that. So every day I'm getting these messages, sir, because of my college, because of my university, because of my exam. Today I did not do it, but I will complete it. So that is real good spirit. That's great spirit. That's really great spirit. ठीक है, बड़ी चीजें छोटे steps में ही होने वाली हैं. True or not? Big things will be achieved in small steps. So from which book we have to read eustatic, isostatic, diastrophic? Which book? Mathematical में आएगा. Mega, I will send you handout. वैसे सविंदर सिंह में मिल जाएगा. I will be sharing handout with you. You get that? तो ये हो गया. और बताइए. Any other question? Any other doubt? So are you clear? People who have done the foundation with me, who've done all the orientation classes, are we going towards that target which you have written on the wall? I don't know how many of you were there in that class and how many of you continued after that. क्योंकि उस दिन तो सभी लोग जोश में होते हैं. सर सब कर देंगे. True. So do you feel you're going in the right direction? See, exam में क्या आएगा? Many things can come. But I promise you that if you do whatever we are doing in the class, in the letter and spirit of it, you will do very well. You will clear it. Shivangi sir, this is my first class after completed all previous lectures. Okay, perfect. Shivangi, welcome. Participate in the class. Learn from the class. Get that? So that's my welcome to all of you. And I guess we have given 5 minutes. So अगर आपके और कोई question नहीं आ रहे हैं, तो can I start the class? So due to office, I am not able to attend on Monday and Wednesday, but covering it afterwards. Perfectly okay. Purvi Singh sir, because of the foundation course, it has become very easy to make maps. Purvi, foundation course was giving you the equipments which will be needed for the main course. बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मेन कोर्स में पढ़ाएंगे, सेम चीज पढ़ाएंगे, कम पढ़ाएंगे, ज्यादा पढ़ाएंगे. Leave it to the teacher, leave the design to the teacher. If you are being a part of the game, that will happen. आपको क्या करना है? आपको सिर्फ whatever is in your control. Say for example, Akshaya says that there is an office on Monday, won't be able to do that. That's okay. What is in your control? What you can see is important. What I can see, don't worry about it. I can see a lot of things. From your answers, I can see many things. Yes or no? From your examples, from your diagrams, I can see many things where you are. From the questions you ask in the class, I get to know where you are. Everything is there. You work on what you can see. Get that? And you will find that with classes, your vision will widen. You will be able to see more things and you will be able to become more effective. Some of you might find it very stupid. Yeah, homework data is हम ऐसे school में करते थे. Trust me, it is going to work. Get that? So before I start my class, let me start with a story. I don't know पिछले बच्चों ने सुना है नहीं, कुछ पिछले बैच के बच्चे भी होते. So do I start with the story? So there is this boy who really wants to join an academy. Okay, it's a very prestigious academy and it is situated. So I've watched first 2 classes. Should I continue with live or recorded? So with first 2, which classes बच्चे? Have you seen the course orientation class? If you have seen that course orientation class, this is a new topic. You can sit in the class. You can continue with this. This is a fresh topic. And उसके बाद आपको जो है साथ में एक lecture करते रहिए. So 2 lectures a day. You'll have to finish that. ठीक है? So you can sit there. So this boy wants to join this academy. Okay, it's very famous academy, and very few people are given a chance to join that academy. And the learners get the best of the teachers and the best of the experience. And it is not about some books. It is about experiences, life experiences. So when he applies for that academy, and he is selected, and selection is just step 1 that you are allowed to be in the academy. You have to report to the academy in time. So he said, no problem, I will reach there.
So then he's told that the academy is situated at the top of a mountain. At the top of a mountain. Yes, it is somewhere here. And there is this winding path to reach that academy. And it is very, very difficult to reach over there. It is generally an area which is very rainy, and walking on this is also dangerous. Preferred time to reach there is day before sunset. Before sunset, you should reach over there. Is everyone okay? He says, no problem, I will do that. So he reaches, and he's trying to make it to the foot of the hill by noon so that he can climb up. But for some reason, he gets delayed, and now it is evening. He reached at the foot at evening. Now he knows it's a dangerous path, very difficult to reach there. You can see the academy right up there, but it is very difficult, and he can make it. He's just come a day before, so he's okay. उसने कहा मैं जल्दी आ गया हूँ. I did not want to miss this. Let me do it tomorrow. So he comes here, and he sees it's dark, and he looks for some place where he can spend the night. So he sees a hut. He sees a hut, and in that hut there is some illumination. Okay, some illumination in the hut. So what he does is he walks up to the hut, and he talks to the people over there. So there's an old man sitting over there, and he asks him, "Can I spend the night over here? क्या मैं रात यहाँ गुजार सकता हूँ?" He says, "Why do you want to spend the night here?" He says, "I have been selected for the academy. I want to join the academy, but now it is sunset, it is dark, and I don't know how to reach up. So I want to stay here." So the old man said, "But you reach the hut and you have a lamp with you. Why don't you climb up?" He says, "I have a lamp, only a lamp. I can't even see the road. And they tell me that it is all wet and slippery. How will I reach that?" He says, "You need not see the road. You just need to see what is around you. That helped you come close to the hut. Same way, you will reach this. A lamp is enough. All of you, you may not see the road to civil services. The lamp is enough. Whatever you are seeing, if you are able to see, well, the oceanography diagrams, that's enough. If you are able to see that I am able to make a diagram or write an answer or solve a multiple choice question on this, that's enough. Because you'll find that with time, you will be able to see more." He says, "Young boy, you are in the right time. Don't worry. Who knows what happens tomorrow? Don't let your dreams die. Work for it today itself." And climb. And the boy did climb and reach there at the night itself. So I'm inviting you that whatever you have, a small lamp or a big lamp, have trust in yourself. Yes, sir. Don't just come for the entertainment sake of it. कि मजा आना चाहिए सर, क्लास में बहुत मजा आ रहा है सर, इतना सही, बहुत मजा बांध दिए. मजा तो बांधेंगे. यहाँ पे तो डिस्क भी था. You could have spent the night at the disc. रात को पी के आउट हो जाओ और सुबह पहुंचे भी नहीं. Yes. So I'm inviting you, whatever you have, please do it with a lot of love, with a lot of passion. Don't get carried away with all those ideas कि यार इतने टाइम में नहीं हो सकता. You are humanities background, first attempt nobody clears, or like your subject, come on, why did you take geography? Why did you not take this subject, that subject? Why are you not preparing for MCQs? Why are you still focusing on optional? Your journey, what you can see, your plan, what you can see. ये सब कल आपको डायग्राम्स भेजे थे, है ना? तो ऐसा हुआ कि ये माउंटेन है. This was the mountain, and this was the sea. But the sea entered. So because of that, the valley which was there in between the mountains, there was a valley in between the mountains. No, what happened to the valley? The valley got submerged. ऐसा बना था. तो कल किसी ने मुझे डायग्राम सबमिट किया. Somebody has submitted the diagram, and here instead of writing submerged valleys, the person writes submissive valleys. है ना? गलत हो गया कि नहीं? Is it wrong? Drowned valley, submerged valley, absolutely okay. But यहाँ क्या हो गया? Submissive valley. So error is error, that's okay. But do you understand where is the error? Where is the error? Submissive valley नहीं है. ये कौन सी valley है? Submerged valley. True. So where is the error? The person was making this diagram mechanically. कल भी हमने कहा ना, क्वेश्चन जो किसी ने पूछा, so I said your questions have a context. उस context में काम करिए. So अगर आप इसको with all emotion and your mind and logic से कर रहे होगे, so will you make this mistake? No, you will not make this mistake. And as I said, that whatever homework you submit and everything that you do, that just tells me that where you are stuck. So my job to remind you कि बच्चे सही कर सकते हैं. Is everyone okay? So good, congratulations if you did this work. If you did not do this work and you're planning to finish it tonight, good. You have the lamp, keep it. That will help you clear the exam. Do we get that? If anyone is thinking that one day the roads will be very, very beautiful, it will be like that of developed countries and highways will be there, then I will go to the academy, the university, Lavasana. देखो लवासना पहुंचना है तो जो लैंप अपने पास है उससे काम चलाइए. And I'm saying that is more than enough to show you the path. Trust the old man telling you that. Get that? चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं. So what do we have? यही नहीं यार, स्लाइड ही अपलोड नहीं किया तो कैसे करेंगे? So we don't have anything. लाते हैं स्लाइड. Okay, where are we? Let me locate the slide. Oceanography lecture 2 slide is coming for you. So T.me Sachin Sir Official is my channel.
वी आर गोइंग फ्रॉम द फाउंडेशन. इफ यू मिस द फाउंडेशन, टाइम निकालिए, फाउंडेशन कर लीजिए. बहुत सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं, प्रिपेयर करी जाती है. एंड आई हैव वन मोर प्रपोजल टू ऑल ऑफ यू. फाउंडेशन में आपने एक बुक किया, जी सी लियोंग, एंड किस तरह से किया? टीचर्स वे. Yes or no? You did it my way, everyone. And you did NCERT's your way. Which one was more effective? My way. Are you genuinely happy with that? Genuinely gained from it? ऐसे सर का दिल रखने के लिए कर रहे? No, sir, we gained from it. We did well with that. Okay, perfect, good. But NCERT तो रह गया. Sir, we still remember all things. We did it that way. But NCERT में तो वो नहीं हुआ ना. NCERT में भी हो जाए तो कैसा रहे? How about that? So students who have joined me late, okay, and the students who have already joined me, you have an opportunity. Once we finish paper 1, paper 2 में gap है ना? Can I offer you a foundation 2, which this time will be NCERT teachers way? Make sense? So as it is, you are preparing for the examination. You want the holistic thing. We'll have NCERT 6 to 10th, the teachers way. 11th and 12th, that is there. उस gap को भी use करेंगे. Gap को भी use करेंगे. I said I can see the big picture. I can see the road. You just have your lamp. So you have your lamp in GC Leong. You are happy about it. Main course में आप क्या करेंगे? Class 11th and class 12th NCERT अपने आप कर सकते हैं. और Geography made simple and सविंदर सिंह. इसमें क्या करेंगे? Selective. चलेगा? ये main course. This is foundation 1, foundation 2 में NCERT कर लेते हैं. हो गया, सब ready हो जाए. We will have our diagrams, we will have our notes, we will have our answer writing, we will have the teacher sorting our doubts. सब तो हो जाएगा. इससे और comprehensive क्या लोगे? And people who have missed the foundation, जिनको ऐसा लग रहा है मैंने मिस कर दिया, तो यार आप साथ-साथ में करते रहिए. Because I believe that people who miss the foundation, even if they do those classes, no, they will not get that thing which we did in a time way. Remember I gave you targets, इतने time में ये खत्म करना, one day this. उनको time में वैसा नहीं कर पाएंगे. They will listen to it, they will get the idea. But if we don't do it, it doesn't happen. So that's my proposal. I was ruminating over it. मैंने सोचा, मैंने कहा और कैसे students को इतना strong किया जा सके कि they will be knowing everything about geography. और ये जो एक gap आ जाता है through their ways, why not work on that? So this is what I was thinking. So that has been conveyed to you, and that's a promise which we will be delivering on. आज क्या है? आज lecture 2 है and ocean bottom relief पर. And as I told you that oceans were considered what? Oceans were considered flat. Their bottoms were considered flat. तो उसी पर हम बात कर रहे हैं, oceanography. When I'm talking about oceans, okay, am I talking something about hydrosphere? Yes or no? Now when I'm talking about hydrosphere, I'm talking about all water, not just oceans. And I want to tell you, if all water is 100%, then 97% is where? In the oceans. 97% is in the oceans. Do you get that? Around 97. 2% is where? In the ice caps. And 1% is fresh water outside the oceans and ice caps. और ये कितना है? अगर इसको मैं 100 यूनिट्स ले लेता हूं तो 55 यूनिट्स are in groundwater below 750 meter depth and 45 units are groundwater above 750 meter depth. So पहले तो oceans को समझना, placing things over there. So if I see like 3 major components where Earth's water is: ocean, ice caps, and where did the hydrosphere come from? It came from degassing. Plus, as some people do know about it, some from comets also. Can I say extraterrestrial sources? True. Extraterrestrial sources. इसमें खत्म हो गया water. So, but rivers वो तो आए नहीं. Everything is over. There is nothing. Like what you and I are using is hardly anything. I would say 45 minus. And this minus can be in this also. I would say lakes. Lakes have fresh water. Lake Baikal, Lake Tanganyika, they have fresh water. Then rivers, lakes, ponds, reservoirs. Yes. Then I think soil has moisture. Yes. So soil has moisture. Plants have moisture. Atmosphere has moisture. So it's hardly anything. Can I write negligible? Negligible. So first of all, we must understand that what is it that we are talking about. So oceans, when we are talking about oceans, hold 97% of the world's water. Significance. Important, that is that. Sir, in terms of groundwater, what we consider? Below 750 meter or whole? So, Sumit, I have written groundwater. Both is groundwater. Both of them are groundwater. जो भी पानी में है, both of them are groundwater. Why 750 meter? 750 meter तक replenishable है. The water up to 750 meter is replenishable.
इसलिए वो डिस्टिंग्विशिंग कर दिया. तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. होप यू गेट दैट. 750 मीटर के नीचे ऐसा नहीं कि ऊपर से पानी गिरा तो वो रिप्लेनिश हो जाएगा. रिप्लेनिश कैसे होता है? व्हाट इज रिप्लेनिशिंग? व्हाट प्रोसेस? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन. समझ में आ गया? सुमित, डिड यू गेट योर आंसर? तो पूरा का पूरा है, वी टेक द होल ऑफ इट एज ग्राउंड वाटर, बट हमने डिस्टिंग्विश ऐसा कर दिया कि दैट इज दैट. ठीक है ना? सो ऑल ऑफ अस आर ह्यूमन बीइंग्स, नो, बट कैन आई डिस्टिंग्विश बिटवीन इंडियंस, रशियंस एंड अमेरिकans? It's like that. All the water that is there, if it is not there, most of it is within the earth, ground water, and 55 units are, उन्हें हम टच भी नहीं कर सकते, हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते उनके बारे में. एक बार निकल गया तो क्या हो जाएगा? Once we are able to pull that out, then what will happen? वो हमेशा के लिए चला गया. Ground water is nature's buckets. I empty the bucket. Rain will fall, it will percolate, again the bucket will be filled up. Yes or no? But वो वाले जो होते हैं water, that is something if I am able to pull out, it will never be replenished normally. तो क्या हम उसे pull out कर सकते हैं? Can we pull out? Oh yes, there are places. There are places, and especially in desert, Israel में and West Asia में, there are places जो ये water, इसको fossil water बोलते हैं वो लोग. ये तो छूना ही नहीं चाहिए. But we can reach up to that also. Do we get that? So एक बार ये खाली हो गया तो remember there will be a gap over there, vacuum over there, and the plates can collapse on that. चलिए. So I hope that adds to our debate. Since you asked the question, I have added to it. I also want to tell you that oceans cover more than 70% of Earth's surface. True. More than 70% of Earth's surface. Get that? And if I'm looking at that, they are significant. They are very, very significant. Can I say they are significant for water? Water reserve hai. Can I say food from sea? Can I say energy from sea? Can I say minerals from sea? True. Can I say global climate regulation? And can I remind you of this idea? Eat budget ka part hai. Yes. Can I also say life originated in oceans? So planet has life, courtesy oceans. Yes or no? And global bulk trade, ocean for trade across oceans. Important or not? So ocean is that important. Ocean is that important. And anyone who has the ocean touching its coast, any country which has, that country is blessed. And countries which are inland countries like Nepal, like Bhutan, yes or no? Are they missing on something very important or not? Yes, you see missing on that. Yes. So people were saying biodiversity. I said all life originated over there. Life is there, biodiversity is there, everything is there. Get that? तो वो सिर्फ पानी नहीं है. It is not just collection of water. It is not just collection of water. It is a lot of things which are over there, and we need to appreciate that it has very significant importance. So इसको regulate भी करना चाहिए. Yes or no? So oceans को कौन देखता है? IHO, International Hydrographic Organization. UN body है IHO, International Hydrographic Organization. So how many oceans are there? कितने oceans हैं? How many oceans are there? So ocean is one. One ocean. Ocean is one. You can see all connected, no? Imagine there is a bucket and you put 5 balloons in that bucket full of water. Bucket full of water, you put 5 balloons in that. How many balloons are there? 5 balloons. How many waters are there? One water only. So continents seem to be dividing the oceans, dividing the whole water body which once covered 100% of the planet. Do we get that? अब आपने देखा origin of oceanic crust भी आपने देखा. How was the oceanic crust created and continental crust created? Remember I told you the story. So in the geomorphology basic class. So it seems it was all ocean, and I told you, oceanic crust is shortening, and continental crust is taking birth. So IHO with time divided the world into 3 oceans: Indian Ocean, Pacific Ocean, and Atlantic Ocean. Later on they added 2 more. Pole वाले को क्या कहा? Arctic Ocean. And South वाले को क्या कहा? Antarctic Ocean. So how many oceans? Pacific, Atlantic, Indian, Arctic, and Antarctic. Do we get that? 5 oceans. Who has done that nomenclature? IHO has done that nomenclature. Yes. And in year 2000, they said we will stick to 5. But Antarctic Ocean will be called as Southern Ocean. When there were only 3 oceans, that meant that Indian Ocean and Pacific Ocean and Atlantic Ocean extended from pole to pole. But moment I created 2 more, that means north one goes to Arctic and the south one goes to Antarctic. तो हमने क्या कर दिया? All waters, सारा पानी, all waters south of 60 degrees south will be considered as Southern Ocean. So even parts of Indian Ocean, parts of Atlantic Ocean, parts of Pacific Ocean, which lies south of 60 degrees, are being chopped off. Is everyone okay? Clear है? कोई doubt है तो पूछिए. Ocean हमारा, हम कुछ भी नाम रखें. Yes, no?
आपने अपने राइट हैंड का नाम रख दिया छोटू, लेफ्ट हैंड का नाम रख दिया मोटू, nobody can stop you, it's your hand. So similarly, as I said, ocean is all water, one water body. We human beings, for our own classification, as we named countries, as we divided Africa, the continent, into various countries, we have divided the whole water of the planet, all unified water, into 5 units, and those 5 units are called your oceans. ठीक है, oceans हो गया, very good. अब इसी में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आज हम क्या करने वाले, कल हमने क्या किया, वेव्स से कुछ हमने बात किया, waves, so wave is not complete but we did look at that, and yesterday we also looked at sea level change, positive movement, negative movement, and because of their combined, because of these two, we did landforms, coastal landforms भी हमने किया. Can I say this is a fusion of geomorphology plus oceanography? Everyone with me? तो ये fusion area था, तो I thought one topic has been completed, other has started, why not go for that fusion? तो इसलिए मैंने आपके साथ ये किया. आज हम क्या करने वाले, bottom topography करेंगे, Atlantic, Indian and Pacific Ocean, and today we'll also talk about this topic. थोड़ा सा देखते हैं. So where did I left the class yesterday? With vocabulary. ठीक है, इनिशियल क्लास में vocabulary होनी चाहिए. So do you know what is epipelagic? Do you know what is dysphotic? Yes, and do you know what is neritic? ये तीनों वर्ड पता है या नहीं पता है? तो बहुत बताया था. Is everyone confident? Yes. इसका डायग्राम बना लेना था. Neritic का तो डायग्राम बन सकता है. Why not make these diagrams also? Depth wise ही तो बनाना है. See, I'm saying it's your notes. Before the examination, if you have everything compiled with you when you are doing the course with the teacher itself, ठीक है, आप तो GS भी कर रहे हैं ना, everyone, honestly tell me, you are doing GS also. Are you doing the similar things? Is the teacher that rigorous? बेटा ये करना है, वो करना है. यार अगर इतना ज्यादा कर दो ना, बच्चा कोर्स छोड़ के भाग जाता है. The student is in the Netflix mode ना, ये मास्टर सच में पढ़ा रहा है, बिल्कुल ही IAS बनाएगा क्या? मैं शाम को आया था, उसके नाम पढ़ना इधर, वो आई हुई है आज क्लास में. ये नहीं पता वो नहीं आई हुई, उनके पिताजी देख रहे हैं. बट फिर भी दिल पे बहलाने को ख्याल तो अच्छा है, वो आई है तो इसलिए मैं आता हूँ और ये पढ़ा रहा है. ठीक है, एंड कई लोग आंसर इसलिए देते हैं, नॉट फॉर द टीचर, नॉट द आंसर व्हिच इज आस्क्ड बाय द टीचर, आंसर सो दैट शी रीड्स. ये बहुत पढ़ रहा है. एंड समवन वेरी क्लियरली, समवन सेंट अ मैसेज टू वन ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम दिस बैच, हाय कहाँ से हैं, आपका तो सरनेम भी सेम है, गर्लफ्रेंड बनोगी? योर सरनेम इज आल्सो सेम लाइक माइन, सो विल यू बिकम माय गर्लफ्रेंड? नाउ वांट टू टेल दैट पर्सन हु हैज डन दिस, हाउ स्टूपिड कैन यू बी बच्चे. यही रिकॉर्ड लेकर अगर वो पुलिस में चली गई, अगर वो चली गई जो तूने लिखा है चाचा उस पर, तेरे भी तो मोहर लग जाएगी, फिर तेरे को यूपीएससी भी डिस्क्वालीफाई कर देगा. कम से कम ऑफलाइन में आदमी इतना तो दिमाग लगाता है कि पकड़े ना जाऊं, मैसेज लिख रहा है चाचा. सोचो, गर्लफ्रेंड बनोगी? लड़की ये भी नहीं कह सकती कि शक्ल देखिए क्या, क्योंकि शक्ल भी नहीं डाल रहा उधर, अकल तो दिखी रही है कि ही इज अ फूल. इमेजिन यू आर एक्चुअली ईव टीजिंग अ गर्ल विद योर रिटन डॉक्यूमेंट, रिटन रिकॉर्ड, गर्लफ्रेंड बनोगी, तेरा मेरा तो सरनेम भी सेम है. सोचो कितना बड़ा गधा है. So the girl sent to me, सर इसका क्या करना है? मैं कह रिकॉर्ड रख, कोई दिक्कत नहीं, इसका तो तेल में डुबा के डंडे मारेगी पुलिस. और ये मोहब्बती जो बन रहे हैं, you can see there are many people. So if I ask these people to, ये तो आई नहीं होमवर्क करने. ए मजा तो उनकी में आता है भाई लोग, बहुत मजा आता है. क्यों? वहां तू जीएफ और बीएफ बनेगा. सर I was about to take screenshot but that guy deleted the whole chat. हाँ कोई दिक्कत नहीं है. सब आपको पता नहीं है साइबर में कितनी सारी चीजें पॉसिबल हैं. इनको लगता है कि डिलीट कर दिए गए है ना, तो मजा बहुत आएगा, चिंता मत करो. खुशी ने कहा आई हैव डन बिफोर. जैसे ही मैसेज आया ना एकदम स्माइल करा करो, कोई टेंशन, सब रिट्रीव हो जाएगा. उसी को फॉरवर्ड कर दो 2-4 जगह पर, अपने 2-4 अकाउंट्स में उसी पोस्ट को फॉरवर्ड कर दो, जहां भी जाएगा, डोंट वरी, उसके प्रिंट्स मिल जाएंगे. और मोहब्बती आदमी को सोचो क्या होगा यार, इसको आईएएस बनाना चाहिए क्या? ये तो पकड़ा जाएगा, चोरी करेगा, पहले रिश्वत लेगा, इसका कैरेक्टर तो क्लियर है, और उसके बाद धरा भी जाएगा. बताओ यार, गर्लफ्रेंड बनोगी क्योंकि मेरा सरनेम सेम है. बहुत सही वे. यू कैन इमेजिन लॉजिक. मतलब आज की डेट में अगर आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड भी करना है, थोड़ा तो ब्रेनस्टॉर्मिंग करता. अगर मेरी क्लास अच्छे से अटेंड कर रहा होता तो प्रपोजल तो अच्छा मारता. और सरनेम कौन सा तूने बनाया हो? तो पिताजी ने बनाया है, पिताजी ने बनाया है. ये सुनो, तो सरनेम अरोरा हो, चाहे खान हो, चाहे गुप्ता हो, चाहे शर्मा हो, वर्मा हो, कुछ भी हो सकता है, सिन्हा हो, वो तुमने बनाया, पिताजी ने बनाया. ये सुनो, ट्रम्प भी हो सकते थे तुमसे ना हो पाएगा, गोल्डन बाल वाले. So anyway, जो भी था, बहुत बड़ा मतलब कैरेक्टर था. So I would want you to be better. My students है ना, प्लीज प्रपोज कर दे तो have some dignity यार. क्या छुप के कर रहा है? छुप के कर रहा है तो वही करता है जो करता है, तो चुप कर. सच में कहाँ तुमसे हो पाएगा. हाँ प्रीति बोली हमारा तो ऑप्शनल भी सेम है, कितना सही निकाला. शिवाजी बोले सर नाम बता दीजिए. शिवाजी एक बात बताओ, यू हैव रिटन योर नेम एज शिवाजी. डू आई नो यू आर शिवाजी? ओनली वन ऑथेंटिक जिसका कुछ भी चेंज नहीं हो सकता, वो मैं. यस सर. Yesterday this girl from Kanpur, in the GS batch, I asked her because rank 4 सौम्या पांडे के साथ आज इवनिंग में कुछ एक हम एक इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कर रहे थे अकेडमी. So I did not remember. तो मैंने अपने बैच के एक स्टूडेंट को भेजा, आर यू द सेम पर्सन? शी सेड नो सर आई एम नॉट द सेम पर्सन बट आर यू सचिन अरोरा फॉर श्योर?
मैंने कहा भाई ये नंबर मेरे पास है आज तो नहीं, ठीक है। सो इट्स एब्सोल्युटली ओके यार। सो एवरीवन वोकैबुलरी कर ले, ठीक है। और ये मोहब्बती लोग जितने भी हैं, तो यार दिल से करो यार मोहब्बत, दिल से करो मोहब्बत, और दिमाग से भी करो। और ये जो फ्री में मौका मिल गया ना, इसमें फ्रस्ट्रेशन मत निकालो यार, है ना। सोशल मीडिया पे कुछ भी, सामने अगर लड़की आ जाए तो बेचारा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इस पर कुछ भी लिख दो, ट्रू। तो थिंक अबाउट इट। हाँ जी, आगे बढ़े। हाँ, तो वोकैबुलरी की बात कर रहे थे। क्वेश्चंस क्लियर हो गए सबको? 5 बाय कन्वेंशन, 5 क्वेश्चंस बाय कन्वेंशन। अच्छा, उसके बाद हम क्या करते हैं? सी। व्हाट इज अ सी? सी इज अ लैंडवर्ड एक्सटेंशन ऑफ oceans. Is everyone okay? C is a landward extension of oceans. C दो तरह के हो सकते हैं. One is marginal sea. Marginal sea. What is a marginal sea? I would say marginal on the margins of the ocean. ठीक है, मार्जिन ऑफ द ओशन। तो एक मार्जिनल सी बताओ जल्दी से मुझे, अपना अरेबियन सी, यस, साउथ चाइना सी, मार्जिनल सी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा क्या होता है? इनलैंड सी, इंटीरियर सी, और मिडल ऑफ लैंड, मिड ऑफ लैंड मेडिटेरेनियन। इज एवरीवन सर? मेडिटेरेनियन तो सी का नाम। नो, मेडिटेरेनियन इज अ जेनरिक कैटेगरी आल्सो। मिडल ऑफ लैंड, मिडल ऑफ लैंड, सो सराउंडेड बाय लैंड, सराउंडेड बाय लैंड, सराउंडेड बाय लैंड। अब इसमें मैंने कहा कि इट माइट हैव अ नैरो ओपनिंग, इट माइट हैव अ नैरो ओपनिंग, इट माइट बी टोटली एनक्लोज्ड आल्सो। यस सर? इज एवरीवन ओके? तो इसमें हमारे पास क्या हो सकता है? अभी आप देख रहे हैं कैस्पियन सी, कैस्पियन सी तो एकदम ही इनलैंड हो गया, कैस्पियन सी। कैन आई से मेडिटेरेनियन सी, मेडिटेरेनियन सी। कैन आई से रेड सी, कैन आई से ब्लैक सी? हो गया नहीं हो गया? अच्छा, एक और बता रहा हूँ कैटेगरी, वन मोर कैटेगरी, इंटर इंसुलर सी। इंटर इंसुलर का मतलब क्या है? सी इज देयर सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय आइलैंड्स। जल्दी सोचो कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ? सी ऑफ जापान तो फिर भी हो सकता है, बट आप ये सोचिए ना, एशियन सी, बिल्कुल ठीक है। सौरभ, हिमांशु, हिमांशा, सैयद, यूर ओके। इजी बताता हूँ, इजी बता रहा हूँ, इजी 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 एवरीवन। इंडोनेशिया सोचिए ना, इंडोनेशियन आर्चिपेलागो। प्रॉब्लम है ना वहाँ पे, याद रखना, सुलू सी, और क्या है, फ्लोरेस सी, बांदा सी, सेलेब सी, है ना, ऐसे बहुत सारे। देयर कैन बी मेनी मेनी ऑफ देम, दैट इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, तो ये जो मार्जिनल सी होता है ये साइड में होता है, ये जनरली कैन बी ऑन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। रिमेंबर कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होती है, शैलो पार्ट जो कल बताया था, सो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पर ही हो सकता है। जैसे रशिया के नॉर्थ में है बेरेंट सी, बेरेंट कारा लैप्टेव, ये रशिया के नॉर्थ में आर्कटिक पार्ट। हमारा नॉर्थ सी भी, नॉर्थ सी इज ऑल्सो देयर। नॉर्वेजियन सी, सो नॉर्थ सी, नॉर्वेजियन सी, नॉर्वे के ऊपर नॉर्वेजियन सी, ठीक है। अंटार्कटिका में एक है बेलिंग शॉसन सी, बेलिंग शॉसन सी। इज एवरीवन ओके? हाँ, प्रीति सिंह, कैरेबियन बिल्कुल है, एडजेसेंट सी है, इनको क्या कहा जाएगा? मार्जिनल सी। मैं ये क्यों बता रहा हूँ आपसे, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट? सो टुडे आई एम सपोज टू टॉक अबाउट द ओशन बॉटम रिलीफ। यस, first I will talk about general in oceans क्या bottom relief features होते हैं, then we will be talking about individual oceans. So when I'm talking about individual oceans, remember your answer will be incomplete, your answer will be incomplete until and unless you talk about the marginal water bodies also. तो marginal water bodies में ocean है, sea है, और कुछ bays and gulfs भी हो सकता है। bays and gulfs, they are also indentations of sea. तो मैंने आपको बताया था कि ऐसे कोस्ट लाइन है, कोस्ट लाइन में this has been created, so what is this? This is a gulf। और यहां पर इमेजिन एक छोटा सा ब्रेक वाटर, तो ब्रेक वाटर के पीछे जो पानी है वो क्या कहलाएगा? बे। फ्रॉम द लुक ऑफ इट, फ्रॉम व्हाट आई हैव जस्ट टोल्ड यू, फ्रॉम द लुक ऑफ इट सीम्स ओशन इज द लार्जेस्ट, सी इज स्मॉलर, बे इज फर्दर स्मॉल, एंड गल्फ इज द स्मॉलेस्ट फ्रॉम द लुक ऑफ इट। बट आई वांट टू टेल यू, on oceans there is consensus that there are 5 oceans. On seas, bays and gulfs, nobody went into size wise. कुछ historical reasons से certain places are called bays. You will find some bay is bigger, Bay of Bengal is bigger than Gulf of Mannar, true or not? Bay of Bengal is bigger than Gulf of Mannar. And if you ask me, if you name this side, western side as Arabian Sea, why did you not name it as
बे ऑफ बंगाल एज बंगाल सी, वो भी हो सकता था. Some people start talking about नहीं उसका डेप्थ पे डिपेंड करता है and all those things. So that is what I'm saying. So the rules haven't been followed in naming them, but कुछ नाम किसी तरह से होते चले गए and that is how we have been continuing. And as I told you, इतना ज़्यादा understanding of ocean is not very much known to us. We are pretty new to it. ठीक है, ocean के बारे में we have our actual knowledge comes only around last 100 years. कुछ 100 साल पहले हमको कुछ चीजें पता चली हैं. जैसे I would want to say, when we are talking about this, oceans, पहले तो oceans का क्या था? Travelers records. Travelers records. And traveler record क्या कहेगा? Ancient sailors, जो भी उनको समझ में आया उन्होंने बता दिया. Yes or no? Did they know? Did they have the scientific tools and equipments to tell us everything? No, they did not. So हमने ऐसे सुना. Scientific expedition कब होती है? It starts somewhere in expedition by Charles Darwin. Remember Charles Darwin? Charles Darwin, the famous scientist and the naturalist. After the age of exploration, no, not evolution theory, mega. वो सब evolution हो चुका. Charles Darwin is the survival of fittest. So you know that he is a naturalist. So when age of exploration, the ships were going and finding new routes. So the scientists said that we are reaching new lands, new information is coming, and who collects those samples? The sailors collect those samples. Yes or no? So everyone, I have a question to you. आपने blood test कराया? Yes or no? Have you ever got your blood test done? Yes. So you go to a lab, and that person takes a sample of your blood, and it is tested and all those things. Now what happens is lockdown has happened, and you tell the doctor, you tell these people, the diagnostic people, that I want a blood test to be done. So he says, ma'am, because of lockdown, nobody is moving. What you do is you buy a syringe, collect your sample and send it to us. Easy or difficult? You take your own sample and send it to us. We will check it. Difficult? And tell me, is there a chance of a lot of inaccuracy also or not? So who was collecting the samples? Sailors were collecting the sample. For whom? Scientists. So scientists said, यार जो हम चाहते हुए collect नहीं करते, these are fools. So the scientists said, why not we go on their ship itself? So Charles Darwin asked Captain Robert Fitzroy. रॉबर्ट फिट्जरॉय से पूछा कि सुनिए आप जहाज पे जा रहे हैं? यस, मैं भी चलूं क्या? शिप का नाम HMS बीगल. इसको क्या कहा जाएगा? बीगल एक्सपीडिशन. ठीक है, HMS ब्रिटिश शिप है, हर मैजेस्टी शिप. तो HMS भूल जाओ, ये पहले सारे जहाज रानी के हैं. गेट इट? सो बीगल एक्सपीडिशन पे इन 1831 to 36 a scientist has gone. तो शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है? So the traveler record है, but can I say scientific studies begin? True. He's a naturalist. क्या करेंगे वहां पर जाके plant life देखेंगे, animal life देखेंगे, and then he's saying okay, evolution is happening, survival of the fittest and everything. So Charles Darwin ने बहुत travel किया, New World, Latin America and everything. That's an amazing thing for a scientist. That's good. But is this geography? अगर आप plant के sample उठाते हैं, animal के sample उठाते हैं, तो आप बस पहुंचे. But beagle expedition is a start of it. We are in 2030. So how many years ago? 200 years ago. 200 years ago. उससे पहले नहीं पता. ठीक है. After that, there is this person called Matthew Fontaine Maury. Matthew Fontaine Maury is considered the father of modern oceanography. Father of modern oceanography. So he was working on oceans. He was studying from 1806 to 1873. He was working on oceans. He was studying, and he drew the first wind charts. 1847. He was the first one to draw first wind charts of oceans. Now I don't know whether you realize that wind charts are important or not, but imagine a sailing ship whose propulsion is by wind. So knowing where the wind blows, which season does it blow, will it be important or not? That's what Matthew Fontaine Maury did. यहाँ तक भी ठीक है. यहाँ तक ना all oceans नहीं हुआ है. These are some isolated studies, है ना? पूरे oceans की study नहीं हुई. किसी ने wind पढ़ दिया, किसी ने वो पढ़ दिया. एक holistic study की कमी है. We need a holistic study, and that came some 150 years ago, 1872 to 76. 4 years के लिए one ship moved into the ocean. The ship was called Challenger. So this expedition was called Challenger Expedition. And you know what? It had 200 scientists on board. They went to study the physics, the chemistry, the biology of ocean. सब पढ़ के आए. Yes. किसके अंडर था? Sir John Murray. Sir John Murray led this. So Murray's expedition. So that is Maury. This is Murray. So John Murray's expedition. Get that? Captain George Neris was the captain of the ship. Do we get that? George Neris. Just to tell you that kitna recent hai, how recent is the ocean studies.
What am I doing with you? I'm doing with you the basic vocabulary, the basic terms of oceans and oceanography, and we're starting from scratch. Comfortable? Any questions? Please ask. Chaliye. So yesterday I was talking about oceans. I asked you to write some 15 points for every ocean. Pacific Ocean is the largest ocean in the world. It covers 1/3 of the Earth's surface. It separates Asia. That's one. The name Pacific means peaceful. Pacific means peaceful sea in Portuguese language. Pacified in English. किसने नाम दिया था? Magellan. The person who first circumnavigated the Earth, पूरी अर्थ का जो पहला चक्कर लगाया, वो Magellan ने नाम रखा था. So people who have done the foundation with me, वहाँ मैंने Magellan Strait का भी बात किया है. World Geography, if you are not thorough with it, कर लो foundation. Foundation के lectures, one lecture in the evening, खत्म कर दे उसको. 1.5x पे सुनना, you will save some time also and keep looking at the atlas with that. उसी तरह से Atlantic Ocean is the second largest ocean in the world. 20% of the area. ये 30% है, वो 20% हो गया. Do we get that? It separates whatever is there. Indian Ocean का क्या आ गया? It is the warmest ocean. ये तो थर्ड लार्जेस्ट हो. 30% 20% होगा चला गया. इंडिया के पास क्या वो है? इंडियन ओशन के पास वार्मेस्ट ओशन. व्हाट मेक्स इट द वार्मेस्ट ओशन? बिकॉज मोस्ट ऑफ द ओशन लाइज इन द लैंड हेमिस्फीयर. इट इज एनक्लोज्ड इन द नॉर्थ. ये हाफ ओशन. यस. आर्कटिक ओशन इज द स्मॉलेस्ट ओशन एंड द शैलोवेस्ट ओशन. शैलो क्यों है ये? एवरीवन, व्हाई इज आर्कटिक शैलो? आर्कटिक ओशन इज द शैलोवेस्ट ओशन. आंसर आपको आ जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है एंड आई विल बी वेरी हैप्पी. रिज रॉन्ग. व्हाई इज दिस शैलो? ग्लेशियर शैलो बनाता है, वो तो अंटार्कटिका में भी ग्लेशियर है. फ्रेश वाटर. रॉन्ग. खुशी, इट इज नॉट फ्रेश वाटर. अभिषेक इज सेइंग एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ. नहीं. आइसबर्ग नहीं. मधुकर, if it is shallow, why will it have trench? Trenches are supposed to be the deepest. No. Everyone, isostatic rebound. Do you get that? इस पर क्या था? आइस था. आइस तो मेल्ट हो गया. What will happen? लॉजिक ना, कल का लॉजिक आज लगाना है. True. Even Antarctica you will find. अभी जो अंटार्कटिका का लैंड है ना, do you know the land of Antarctica is not at sea level. It is 1 kilometer below sea level because ice is sitting on that. If Antarctic ice melts, what will happen to the continent of Antarctica? It will rise. And what do we call that rise? Isostatic rise. So logic. I said geography is about logic. If you are a smart student, you will think of all that logic. अच्छा, ये भी तो है. I can connect them. So why Indian Ocean is the warmest? You have done some basic of climatology. इधर तो land है ना, land hemisphere, ITCZ shifts so much over here. That's okay. Pacific Ocean, why the largest? In fact, it is considered the remnant of the ocean which Wegener talked about. अभी मैंने बात नहीं किया, but बाद में करेंगे. तो सबका साइज है. Arctic is the smallest also. Arctic is the shallowest also. You know the reason also. And when we are talking about Southern Ocean, it is the southernmost. Yes, it's covered by ice. So that's that. Antarctic का एक ध्यान देना है. Antarctic ice is continental ice और Arctic ice is oceanic ice. Does it make a difference? One ice is continental ice, other is an oceanic ice. Does it make a difference from yesterday's class? What is the answer? जल्दी से बताओ. Sir, if the ice of Antarctic melt and goes into water, sea level will rise. Arctic ice melting से sea level will not change much. Why? Because that has already been displaced. Do we get that? समझ में? But please don't say that Arctic ice melt will not lead to any sea level rise. It will lead, but वो because of thermal expansion होगा. समझ में? Heat तो वहाँ भी हो रही है ना बच्चों. Thermal expansion तो होगा. चलिए. So I wanted to continue with those basic things. और ये oceans में आपने 15 points लिखे हैं तो अच्छी बात है. नहीं लिखे हैं तो I am there to demonstrate things for you. I want you to gain that confidence. किसका है ocean? Who owns the oceans? Who owns the oceans? Everyone owns the ocean. So why is Russia trying to take land or water or Sea of Azov from Ukraine? सबका है. लाकी बोलती bordering countries. Okay, perfect. Bordering countries का है. Everyone owns it? नहीं. Bordering countries का तो A is A, B is B. C is fish. मछली का है. And D is might is right. Namely saying IHO will decide. IHO is there giving boundaries. Yes or no? तो ये ocean किसका है? ये इसका है. जिसकी लाठी उसकी भैंस. Ocean इसका है. जिसके पास जितनी पावर है उतना है. But the problem is power keeps on changing. Yes or no? So first of all, country like India never asserted its maritime boundaries. But naval powers of the time of colonization, be the British,
be it the French, be it the Dutch, be it the Portuguese, be it the Spaniards, they all were fighting that land has been colonized, water also belongs to me. So now tell me, if there is a fight or if there is a claim between Dutch and the British on their colonies, how will that claim be resolved during that time? Dutch and British are claiming some part in India. So there will be a war. Yes, so British coming to India and Indian kings not accepting them. How will it be settled? Marathas के साथ कैसे settle करोगे? Mughals के साथ how would you settle? Rani Lakshmibai के साथ how would you settle? You will fight a war. Winner takes it all. No line, nothing. Winner takes it all. एंग्लो मराठा वॉर आपने देखा, टीपू सुल्तान के साथ वॉर हुए, हमारे मुगलों के साथ वॉर हुए, 1857 का गदर हुआ, 1857 द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, एंड अनफॉर्चुनेटली द ब्रिटिश वन एंड दे आर नॉट ड्राइंग अ लाइन. यस, बहादुर शाह जफर वाज सेंट टू रंगून, वो भी भेज दिया मार देते तो क्या दिक्कत है? रानी लक्ष्मीबाई कांतिया रोके थे, वो किल, ट्रू और नॉट? So that's what we are talking about, that those were the times. But today we don't live in those times. Today we live in more orderly times. So post World War II, it was decided कब तक ये चलता रहेगा, कब तक ये चलेगा? Let us have some international consensus for the politico-administrative classification of oceans. Politico-administrative classification of oceans. ठीक है? 1970s में ये बात हुई, 1970s, even 60s, 70s में ये बात हुई. 1982 में under United Nations, the deliberating countries, after deliberating for almost 2 decades, they came up with a law called UNCLOS, United Nations Convention on Law of Seas. 1982 में इन्होंने टेबल कर दिया, 1994 में it came into force. So countries did not accept it. 12 years तो लगे उसको मानने में. उससे पहले 60s, 70s people were discussing on that. So it's not easy. It's not easy. Say for example, this is like resolving a border dispute. True or not? So किसने काम किया? UN ने काम किया. There is a law, international law, that will tell who owns the ocean. Is everyone okay? Who owns the ocean will be told by a law, and the law is called UNCLOS. Everyone okay? UNCLOS के पास एक strange challenge है. It has to do a balancing act. What is the balancing act? Balancing act है the claims of littoral state. True or not? Now you know what is littoral. High tide, low tide वाली. The coastal countries are called littoral countries. The claims of littoral and the natural claim of human beings. Ocean. How can ocean, how can air, how can water, how can land belong to some country? I'm born on this planet, I have right to it. Unfortunately, the world has already divided lands. True or not? So today is not the time that you can move around like Fahian, Mansang, yes, the great travelers, even the great gurus, sages, yes, Guru Nanak ji traveled in that area, Prophet Muhammad traveled, after that many people traveled. कोई boundary थी नहीं यार, है ना? So you are moving, you see, you know, someone moving from down south, शंकराचार्य साउथ से चलते हैं नॉर्थ में आ जाते हैं, कश्मीर में आते हैं, and he moves and establishes the ज्योतिर्लिंग्स. कैसे? शंकराचार्य ने अपने शैव मठ स्थापित किए, किया नहीं किए? कोई रोक नहीं रहा था. Nobody was stopping. Buddhism spread across east, far east. Nobody was stopping them. Nobody was questioning them. Yes, some spread was peaceful acceptance. Some spread was with military might. That was also there. But ऐसा नहीं था कि like suddenly you have come to a place and you need a visa. चाहिए कि नहीं? आज अगर आपके पास वीजा नहीं है, you are in a country without visa, without regular documents, you are an alien. Yes or no? You're not a citizen. You are an alien, and the laws will apply or not. तो हमने क्या कर दिया है? The land has already been divided. I don't know where the human beings agreed. मेरा तेरा करके हमने कर दिया, और उस पर आज भी हम कब्जा भी कर रहे हैं, है ना? रशिया, यूक्रेन में, yes, we are looking at POK, Chinese, occupancy. All those things are there. True or not? And लोग वहां पर क्या होंगे? लोगों का पूछो मत यार, लोगों की कोई राइट नहीं होती. Some people enjoying the power, misusing the power. As long as those people are responsible, righteous, morally correct people, अच्छी बात है. When immoral people come over there, when a military junta like Myanmar's rule, then what will happen? One of the most costly capital cities in the world are the capital of Myanmar. क्या है म्यांमार की कैपिटल? पिनमाना है, और पिनमाना से पहले क्या थी? नेपिडॉ. सो ये रिवर है, रिवर के एक तरफ पिनमाना है, दूसरी तरफ नेपिडॉ है. ये मिलिट्री कैपिटल है, उन्होंने खुद ही बनाई. इट इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट कैपिटल्स इन द वर्ल्ड. इतना पैसा लगाया उन्होंने उस कैपिटल को बनाने में, बट देयर आर नो पीपल ओवर देयर. लोग ही नहीं उधर. पिनमाना में पैसा लगा दिया, हाईवेज, 10 लेन हाईवेज, अमेजिंग हाईवेज, एवरीथिंग इज देयर, नोबडी लिव्स. सिटी कहां पर है? सिटी तो अभी भी यंगून ही है, व्हिच वाज कॉल्ड रंगून, दैट कोस्टल वन. आज भी लोग वहीं पर रहते हैं.
बना दिया पावर सेंटर है. And you know what kind of atrocities the government forces under the military rule are doing with the people. Yes sir. And that's what we're talking about. और ये कहना कि like religion decides whether a religion is peaceful or a religion is violent, तो बहुत गलत होगा. The LTTE and the Sri Lankan Sinhalese fight was within the Buddhist and the Tamils. Yes sir. If you think Buddhist is Buddham Sharanam Gacchami, peace, ऐसा नहीं. True or not? Now when we are looking at this, like even in Vietnam, even here in Indochina, Myanmar also, Buddhism is very strong. Buddhism is strong, yes or no? But there is an army which can suppress the Buddhists also. And it is the Buddhist, which we will say, Buddhists are only peace for us. The message of Buddha is about peace, yes or no? But in Myanmar, did we see the Rohingya crisis? So visualizing Buddhists not tolerating other religions. Yes. So can I say that religion can be used and misused, depends on the hands which it is. अच्छा भी हो सकता है, they can be fanatics. They can misuse the religion. The normal fabric of the society can be torn apart. And religion can be the biggest healer also. It can heal people when there is death and depression. Religion पे आप hatred spread करिए through political rallies, through cinema, through movies, through whatever, and you can make, you can heal the wounds also through the same instruments. Same politician can heal, same movies, same things can heal also. Choices of the society. If the society is in a mood to live happily and prosperous, they will be into that. True or not? So what I'm trying to say here is, unclass को भी यही balance करना है. Do you fall in the hands of these ambitious, power-hungry leaders, or will you represent the world? किसको करें, है ना? वरना तो सारा claim तो रशिया और यूएस ही कर लेगा. यूक्रेन की तो कोई औकात ही नहीं. Yes, small countries will not have a say. And I also want to tell you, have you heard that tribals in India are generally not very well politically represented? Can I say even UN also, developing nations, third world nations, they were never represented that much. So who was actually fighting for the boundary? It was the French, it was the British, it was the Russians, it was the Germans, it was the Spanish, it was the Portuguese, it was the Americans. ये लोग fight कर रहे थे, हम थोड़ी कर रहे थे. True. So we are very different on that. South China Sea is totally China का claim आज कर रहा है ना. China तो अब claim कर रहा है ना in this decade. इससे पहले तो नहीं किया था, उस टाइम तो China की भी औकात नहीं थी. That time तो China was also nothing. True or not? So I'm saying number one, there should be some law. And it is always might is right. It is always might is right. So China was not that mighty at that time. It is done. Putin has gone on record, when Soviet Union disintegrated, the West was doing whatever. Now Russia is not weak. During the time of Czechoslovakia, we were weak. Yugoslavia, we were weak. अब हम weak नहीं है. हाथ लगा के दिखाओ तुम. आकर दिखाओ इधर यूक्रेन में भी तो यूक्रेन को बजाते हैं. Same thing. Moods will keep on changing. Yes, someone who may seem very democratic today, कल कौन सी सस्ते वाली पीकर कुछ भी करने लगे किसे पता. So that's why democracy is something to be cherished. Democracy is something, whenever there are certain critical inputs of the democracy threads which are being severed, be conscious. बहुत मुश्किल से धागे जुड़ते हैं, अगर ये धागे टूटते हैं, अभी तो लगेगा कुछ नहीं होता है धागे टूटने से. तो बनता है रशिया जो है यूक्रेन को करेगा. आप समझिए इसी से वर्ल्ड वॉर बनते हैं. So what Hitler did, एक ही दिन में तो नहीं वर्ल्ड वॉर हो गया था. One by one, then he enters Poland, then he goes this. Yes, so यहाँ पर take a stand when it is about global democratic institutions, when it is about national democratic institutions, when it is about local democratic institutions, when it is about democracy in your place. We live in a patriarchal society, seriously patriarchal society. Indian society is so patriarchal that I don't even want to talk about women. I'm saying it is not safe even for men. इतनी patriarchal है कि भाई men भी safe नहीं. You can kill any man on the road in the name of patriarchy. And that's the sad part of patriarchy. And trust me, I very clearly am aware, and I'm sure you are also aware, many families, even now in India, especially in North India, the son can never talk straight to the father. No, Madhukar, I'm not talking about mob lynching and religion. I'm saying पिताजी से आंख में आंख डाल के सीधा बात नहीं कर सकते आप. That's the degree of patriarchy. आप कर ही नहीं सकते पिताजी से सिर्फ झुका कर बात. And with all due respect to that. Yes or no? But the fact is, where is democracy over there? फिर आप बताइए पिताजी की बात पत्थर की लकीर है. Sir, what is wrong, sir? That's a good thing. He's a wise man. Absolutely okay. But problem ये है कि उम्र बढ़ने से लोग बुजुर्ग नहीं हो जाते. Increase in age does not necessarily translate into wisdom. Yes or no? So that's where I'm saying that wisdom should be respected. Age, experience should be respected. But there are people with age also, life hasn't been able to give them lessons. In fact, they are misusing certain things only because of the age. Have you seen child abuse? Have you seen dowry deaths? किसी religion की बात कर रहा हूँ मैं. Am I talking about religion? Have you seen honor killings? कहाँ से आ रही? Where are they coming from? Brute, absolutely brute patriarchy. You think men are safe? Think about it. So I'm saying there are merits in having
someone who's wise as the head of the family. Yes or no? And if there is an unwise person as the head of the family, and just because patriarchy doesn't allow you to question, isn't it a curse? True or not? अनक्लॉज का काम आसान है या मुश्किल है? It took 20 years. समझ रहे हो? 20 साल लगे इसमें, है ना? लड़की हो इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है. हमारे यहाँ लड़कियां और नहीं पढ़ती हैं. ज्यादा पढ़ेगी तो रिश्ता कहां से मिलेगा? इफ यू टीच द गर्ल टू मच, इसकी शादी कौन करेगा भाई? कैसे नो? परिवार की नाक है लड़की. द गर्ल वाज रेप्ड, इसने मेरी नाक कटवा दी. Patriarchy blaming the victim of a rape. It is patriarchy. It is not Hindu, it is not Muslim. It is patriarchy. Please understand. Please don't see the Chaudharis of religion as religion representatives. They are representatives of patriarchy. Power at any cost. उनका कुछ लेना देना नहीं है धर्म से. धर्म के ठेकेदार किस लिए बने हैं? उन्हें वो patriarchy रखनी है. So Indian Constitution uphold that. How much problem facing India? मुझे नहीं पता. Constitution बनाने में भी टाइम लगा था ना. Indian Constitution, has it borrowed from various other constitutions? And do we feel that the Constitution framer, the Constituent Assembly, was a wise one? Do we feel that or not? वो लोग बात आज अपने Constitution ही गलत है, कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? Majority है, क्या कह रहे हैं? So when Indira Gandhi was in power, many people started thinking of why not we have a presidential form of government so that Indira rules longer. Yes, have you heard similar things about Modi ji also? यार पार्लियामेंट्री में बहुत नाटक है. एक बार मोदी जी को फ्री हैंड मिलना चाहिए. We must change our constitution. जब भी आपके पास एक पावरफुल लीडर, उसकी फैन फॉलोइंग आएगी, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्वेश्चन कर सकती है. क्या चेंज करना चाहिए? व्हाट इज रॉन्ग? सी अमेरिका आल्सो हैज अ प्रेसिडेंट. ये सब ये जो अलायंस करने पड़ते हैं चुटभैया एंड ऑल दैट, सो लेट अस गो फॉर दिस. आप समझिए इसके पावर में कहां पर यू आर प्लेइंग विद. सो दिस डिबेट कम्स व्हेनेवर वी हैव समवन पावरफुल इन द सेंटर, नया डिबेट आने लगता है. अलेक्जेंडर लुकाशेंको, यस, बेलारूस के राष्ट्रपति हैं. टेन्योर सिक्योर्ड टिल 2035. टेन्योर सिक्योर्ड टिल 2035. Any act done by him, right or wrong, cannot be challenged even after he remits the post. चचा विधायक है हमारे, चिंता क्या है? वैसे ना विक्टर युकेशेंको, जिनपिंग एंड पुतिन टिल डेथ. वो टर्की में चेंज किया कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा ना टर्की में भी चेंज हुआ ना मिलिट्री को. एर्दोगान करिए जो करना. बहुत मुश्किल से वो थ्रेट्स बनती. शिवाजी बोलते हैं हमेशा 90% से वोट ज्यादा मिलता है. बिल्कुल मिलता है. सारे डिक्टेटर्स को 90% से ज्यादा ही वोट मिलता है. पता नहीं कहां से लाते हैं. So what do you think India should have presidential form of government? I am very happy with the parliamentary form of government. I am very happy with this. ठीक है. और ऐसा नहीं है कि डिबेट नहीं हुआ था. In our constituent assembly there was this debate कि प्रेसिडेंट होना चाहिए या वो होना चाहिए. So I think the debate has happened. ऐसा नहीं कि इस पे बात नहीं हुई. True. So democracy needs parliamentary form. Well, America is a democracy. ऐसा नहीं है. This is the wrong thing. This is the wrong thing that democracy needs parliamentary form. Absolutely wrong. Democracy needs people, educated people. If not educated, wise people, having a healthy thought. It needs a strong media. It needs a fair and frank media. So please don't attach democracy with parliamentary form. That's a wrong connection that you're doing. Abhishek is saying presidential form may lead to dictatorship. May, but it does not. America is an example of. Abhishek, when I have an example of presidential form of government which is non-dictatorial, why should I doubt it? I don't doubt it. I don't doubt it. मुझे कोई doubt नहीं है. मैं तो कह रहा हूँ democracy does not depend on parliamentary or presidential form of government. Democracy is in your heart. Democracy is in your heart. Are you democratic by nature? In India, people still vote as family, not as individual. हम तो खानदानी कांग्रेसी हैं, हम तो खानदानी समाजवादी, हम तो खानदानी भाजपाई. President request a sense of maturity, leader and citizen. तो ज्योग्राफी क्लास शुरू करें. I'm just saying, you want to keep the democracy alive. You are the future of democracy. ठीक है. अभी वो कौन सी यहाँ पर वो है यूनिवर्सिटी यहीं पे नोएडा में टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप वालों की जो है बर्टन यूनिवर्सिटी, क्या है इनकी? There the students are made to sign an affidavit that no गौतम बुद्ध नहीं, टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने अपना एक जैसे एमिटी टाइप का. So students will not take part in anti-national activities. Students will not take part in anti-national activities. किसी रैली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे. पेरेंट्स भी और स्टूडेंट्स भी ये साइन करके फिर आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, प्राइवेट यूनिवर्सिटी. तो एक बात बताइए, हु विल डिसाइड कि वो एंटी नेशनल है दिस थिंग और नॉट? अब एक बात बताइए, कितने बच्चे बिहार में आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द एग्जाम ऑफ आरआरबी अदर थिंग्स? कर रहे हैं ना, और सच में कर रहे हैं. बिहार एंड यूपी में वैलिड रीजन है. दिल्ली में जंतर मंतर पे लोग करते हैं या नहीं करते? यस. अन्ना हजारे मूवमेंट, डिड इट हैपन और नॉट? यस. If today I say intelligence report says that Anna Hazare movement is supported by anti-national events from outside, now that's difficult. That's difficult. Priyanka is saying peaceful protest allowed. बिल्कुल प्रियंका, बिल्कुल सही कह रहे हो. Peaceful protest allowed. यूनिवर्सिटी में साइन क्यों मांग रहा है? Peaceful तो अलाउ कर दे. Yes or no? I'm just looking at that. It's a right to strike under 21.
समथिंग पहले मैं साइन कर रहा हूँ खुशी, राइट टू स्ट्राइक, तो ये अगर मैंने अंडरटेकिंग दे दी मैं कभी स्ट्राइक पे नहीं जाऊंगा, तो कोई लॉ है क्या? ट्रू। सो अनक्लॉज के पास एक चैलेंज है या नहीं है? अनक्लॉज हैज अ चैलेंज. Sir, same thing is happening like when our national movement leaders educated and challenged British rule, but they demonstrated an anti-national. Absolutely, Britishers declared us as anti-national. अच्छा तो फिर हमने क्या किया? When Britishers called Indians freedom fighters as anti-national, what did we do? ओहो, anti-national तो नहीं होना, ये तो बहुत गलत काम किया मैंने, सॉरी, अब मैं कभी नहीं करूंगा. No, we stood for it. We know what is our nation. Yes or no? Britishers, we send us to jail happily. Kill us happily, no problem. तो वही पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे, जो करना करो, जो करना करो. इस बाल गंगाधर तिलक लोग स्ट्राइक में खड़े, लाठी लगती है, मर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं. True. So that's what I'm trying to say here, that whenever it is lawmaking, it has to balance between what some mighty and powerful people want and what is the true natural justice. So natural justice तो ये कहता है, natural justice का principle है mare liberam. What does it mean, mare liberam? Freedom of seas. सबका है. Mare liberam means free sea. Mare liberam. Oceans are heritage of mankind. और यहाँ पे क्या है? Mighty naval power. We are talking about self defense. मेरी टेरिटरी में अगर मेरे कोस्ट पे पाकिस्तानी सबमरीन कम्स, इज इट अ थ्रेट टू माय सेफ्टी और नॉट? यस, मैं तो डिटरेंस के लिए यूज करना चाहता हूं. Nobody is allowed to enter. So UNCLOS has to look at both the cases. UNCLOS has to look at both the cases, and then they came up with this. So please write down. Everyone, please write down certain things. I want to dictate UNCLOS, United Nations Convention on Law of Seas. United Nations Convention on Laws of Seas. UNCLOS. The vast oceans across the world. The vast oceans across the world are a heritage of mankind, and belong to the humanity. However, conflicts between the littoral states, littoral means coastal, conflicts between the littoral states and naval powers, cannot be ruled out, thereby calling for a consensus based international law or legal paradigm to amicably resolve disputes, comma, safeguard the rights of the humanity, as well as the oceans as an ecosystem, and all life present in them. Everyone with me on this? Till the Second World War, the colonial powers exercised control over the oceans, based on their military might. In bracket, please write down cannon shot rule 3 miles. Full stop. However, this often led to conflicts. And brutal wars. Between these countries. Thus,
They decided after Second World War. Thus, they decided after Second World War. They decided after Second World War to frame an international law under the United Nations. International deliberations under the United Nations. Full stop. International deliberations were conducted. International deliberations were conducted in the decade of 1970s and 80s that resulted in the creation of UNCLOS, United Nations Convention on Law of Seas. UNCLOS, United Nations Convention on Law of Seas. This law is considered as one of the best examples. This law is considered as one of the best examples of how global collaboration and diplomacy, can generate a consensus, on international conflicts and disagreements. Generate consensus on international conflicts and disagreement. Next paragraph. UNCLOS has a wide mandate. UNCLOS has a wide mandate while keeping the principle of mare liberam, freedom of seas, mare liberam, as the guiding post of this law. Okay. This law was open for signature. On 10th December 1982. Don't write 10 December. In 1982, and came into force in 1994. The areas it concerns include the following. Number one, delineation of territorial boundaries. Demarcation of navigation rights. Earmarking the commercial exploitability of oceans, in bracket EEZ. Fourth, earmarking of commercial exploitation of ocean beds. Get that? Seabed resources. इसको कौन रेगुलेट करता है? ISA, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. Yes, this body, which is in Jamaica, the headquarters is in Jamaica, as some of you are talking rightly. It's an autonomous intergovernmental body. Established in 1994.
after UNCLOS was there. This was established in 1994. Get that? It enforces UNCLOS provisions for seabed. UNCLOS में ओशन का बेड किसका है? सीबेड के लिए it enforces for seabed. And for that इसका क्या काम है? What does it do for this? इसका काम है माइनिंग लाइसेंस इशू करेगा. Mining license will be issued. Yes. Funding, conservation and protection, and even collaboration. International collaboration अगर होना है तो इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी उसको भी फैसिलिटेट करेगा. Is everyone okay? So important body, important work done by what? It is being done by ISA. Is everyone okay? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ये भी काम कर रहा है. 4 points done. 5th point, dispute resolution mechanism. Dispute resolution mechanism ये भी आ गया समझ में. तो अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है बिटवीन कंट्रीज, सो देयर मस्ट बी अ ट्राइब्यूनल. वो भी पहले बता दिया UNCLOS में, अगर लड़ाई हो जाएगी तो लड़ाई के टाइम किससे बात करनी भाई? ऐसे बात करनी, ये करना, वो करना. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन. इज एवरीवन ओके? 6th one, part 12 of UNCLOS is very special. Protection and preservation of marine environment. ठीक है. सो इसमें क्या है? डंपिंग ऑफ वेस्ट. यस. pollution due to land based sources and due to seabed exploitation. पॉसिबल और नॉट? उस सब किसमें? UNCLOS के अंडर आपको उस पर काम करना होता है. And I also want to tell you that if you are looking for marks in this, कैसे marks आएगा? UNCLOS is now especially in our syllabus. तो syllabus से चल रहा हूं. I'm doing a syllabus part. Have you heard of United Nations Sustainable Development Goals? SDG 14 is life below water. And one of the sub goals of this is conserve and sustainably use oceans, seas, and marine resources. Now this is where the class becomes different from Savinder Singh. Savinder Singh ये सारी चीजें कनेक्ट नहीं करेगा. Savinder Singh is just going to tell you भाई ये है UNCLOS है, चीजें देनी नहीं देनी है. कई बार से डिटेल भी बहुत सारा आ जाता है. True. There is an international law for pollution on oceans that is called MARPOL. MARPOL convention और MARPOL convention को marine pollution convention कहते हैं. 73-78 1973-78 में आया है. इसके पास 6 annexures like pollution by oil, by noxious substances, harmful hazardous substances, by garbage in the oceans, by sewage in the ocean, by air pollution also. So ships are moving over there, तो उनके pollution जो through their engines they are doing, ये सारी चीजें इसमें है. तो they all can be, can I say, correlated with UNCLOS. True or not? So UNCLOS important हो जाता है, and I want to tell you this part can be used under the legal paradigm against marine pollution. Remember the last topic is marine pollution. और इंडिया में आपने ये भी सुना होगा CRZ. CRZ क्या होता है? कोस्टल रेगुलेशन जोन्स. तो अगर इंडिया के सेंस में है तो आप ये भी डाल सकते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स. कोस्ट गार्ड इज मॉनिटरिंग हमारे कोस्ट पर. ऐसा कुछ गलत तो नहीं हो रहा है. एवरीवन विद मी? तो डीप ओशन मिशन समुद्रयान ऑल्सो. डीप ओशन मिशन में हमारे पास किसके पास परमिशन होनी चाहिए? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी. अगर हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नंबर 1. ठीक है. CMZ इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनवायरनमेंट. हाँ, मरीन जोन्स बिल्कुल लिख सकते हैं. इको सेंसिटिव जोन्स कह सकते हैं, रिजर्व एरियाज कह सकते हैं. इसको पता क्या कहते हैं? आप जो CMZ में जा रहे हैं, CMZ की जगह जाइए PSSA. व्हाट इज PSSA? आई डोंट नो, हैव यू हर्ड अबाउट दैट और नॉट? पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया. There is MARPOL, different law from UNCLOS. Yes.
UNCLOS is about oceans, laws of seas. MARPOL is limited in its mandate, marine pollution. तो ये पार्ट 6 के साथ में UNCLOS तो बहुत सारा काम कर रहा है ना. UNCLOS तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन भी दे रहा है, UNCLOS तो बाउंड्री डेलिनेशन भी दे रहा है, नेविगेशन राइट्स भी दे रहा है. ट्रू और नॉट? सो UNCLOS इज अ वेरी बिग लॉ, बट UNCLOS का वो जो पार्ट 12 है उसको सपोर्ट करने के लिए कोरिलेट्स विद दिस थिंग SDG 14 एंड मार्पोल कन्वेंशन. दैट्स व्हाई आई सेड ये सब चीजें साथ साथ में लेते आइएगा. और पोल्यूशन हो किससे रहा है? अगर आपको ऑयल पोल्यूशन पे लिखना हो तो यही सारी चीजें जो मार्पोल के 6 एनेक्सेस है ना, ऑयल से हो रहा है, नॉक्शियस सब्सटेंसेस से हो रहा है, हार्मफुल हैजर्ड गार्बेज सीवेज उससे हो रहा है. अनिर्बान, आई थिंक सर शिप का स्लज डिस्चार्ज इसी से रिलेटेड है. बेटा स्लज क्या होता है अनिर्बान? व्हाट इज स्लज? ऑयल का ही तो वो है ना, ऑयल का रेमिनेंट. तो जब आ गया मार्पोल में सबसे पहले पोल्यूशन बाय ऑयल, स्लज इज नॉट सीवेज, सीवेज इज सीवेज. स्लज इज ऑयल का ही रेमिनेंट, जो बचा हुआ तेल, खराब तेल होता है वो होता है स्लज. Everyone with me on this? तो मरीन पोल्यूशन थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़े से इवेंट्स पे बात करनी है, व्हाटएवर व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, अगर बीच में कोई इवेंट होता है तो बहुत सारी चीजें हैं, तो मरीन उस पर भी काम करेंगे, मरीन पोल्यूशन पे भी बताऊंगा. बट यहाँ तक समझ में आया, पीएसएस से समझ में आ गया. पर्टिकुलरली सेंसिटिव सी एरिया, वहाँ पे शिप्स को जाना मना कर दीजिए, आप अपना डिक्लेयर कर दीजिए. जस्ट लाइक वी हैव वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व्स, वी कैन हैव अ मरीन नेशनल पार्क. यस नो, वी कैन हैव अ मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व. तमिलनाडु का जो है मरीन नेशनल पार्क भी है. डू वी हैव दैट और नॉट? PSS is particularly sensitive sea area, PSSA डिक्लेयर कर दीजिए और उसमें जो है नेविगेशन को रेगुलेट कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं. जो रोकना चाहे रोक दीजिए, आप सरकार हैं, आप करिए. इफ यू फील दैट विल बी डेट्रीमेंटल टू द एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल लीगल पैराडाइम्स अलाउ यू टू डू दैट. इज एवरीवन विद मी? कोई प्रश्न है तो पूछे. क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात है. अब कहां पर हैं हम? हाँ, तो ये जो इन्होंने हमें बताया, अभी मैं इस पर फिर से आऊंगा मरीन पोल्यूशन पे. I'll see if the class has time, तो मरीन पोल्यूशन की बात करेंगे. अभी बात चल रही है UNCLOS, एज पर UNCLOS. सो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन और जोनेशन एज पर UNCLOS. सर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई स्पेशल बेंच होती है UNCLOS की? हाँ बिल्कुल है, मैरीटाइम ट्राइब्यूनल्स है. सर व्हाई नॉट चाइना फॉलो UNCLOS रूल? खुशी, रशिया इज नॉट फॉलोइंग इवन. यस नो, रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया. व्हाई नॉट? पूछ सकती हूँ, तुमने कभी नहीं पूछा, किसी से पूछा? So how can Russia attack Ukraine, sir? This is not fair. Yes or no? He's not only attacking, he's saying if you meddle in our affairs, we will go nuclear. इस पे तो युवापा लग जाना चाहिए कि नहीं? वर्ल्ड का युवापा, जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए चाचा को. सर तो पनिशमेंट कौन देगा जो रूल ब्रेक करेगा UNCLOS के? खुशी बोलती पनिशमेंट कौन देगा? तुम बताओ ना, दो तो सही. सी, जो बाइडेन सेज दैट व्हाट पुतिन हैज डन इज वॉर क्राइम. तो मुझे बताओ खुशी, वॉर क्राइम की पनिशमेंट कौन देता है? यूएन देता है. देख दिखाओ. साउथ चाइना सी को क्रॉस करने के लिए चाइना का परमिशन चाहिए. अब इनके यार तुम्हारे जवाब देने में जरूरत समझता नहीं है ना. पता नहीं कहाँ से लाते हो, किसका ले आते हो, अब वहां से चाइना की परमिशन चाहिए. कैसे लेते हो परमिशन? में से फोन करते हैं, हेलो मैं जरा आ रहा हूँ उधर साउथ चाइना सी, परमिशन दे दो. हवा उड़ाने के लिए कुछ भी उड़ाई जा सकती है. हिंदू, मुस्लिम, चाइना, रशिया, जो करना करो. बाकी तो व्हाट्सएप थोड़ी ना कुछ. आज तक शिवाजी बीच ओशन में बैठा है चाइना, बीच ओशन में, बीच ओशन में बैठा हुआ. यस, आ गए हमारी जमीन पर, आकर बैठ गए ये लोग बीच ओशन में. कहां से लाते ये सब? कभी ओशन देखा? बीच ओशन में बैठा हुआ है. देखा कुछ है नहीं, और फिर यहीं पे सडनली लाइक देशभक्त बन जाते हैं. देश के लिए कुर्बानी, ये तो मैं ही जानता हूँ खुद. अगर अभी एक फ्री टिकट मिल जाए ना दुबई में, कि दुबई की टिकट मिल रही है फ्री रिटर्न, एकदम सारी देशभक्ति भूल के. सर जी बताओ क्या करना है? ये जूता साफ कर. सर करूंगा ना सर, दुबई की एक ट्रिप दे दो. हाय देशभक्त, सब फर्जी. चलिए तो बात करते हैं UNCLOS ने क्या काम किया. इज द कोस्टल कंट्री. सो UNCLOS को उसके जोन्स बनाने थे. सो UNCLOS ने कहा हेलो मिस्टर कोस्टल कंट्री, योर कोस्ट लाइन इज नॉट स्ट्रेट. पहले इसको स्ट्रेट करिए. योर कोस्ट लाइन इज नॉट स्ट्रेट, प्लीज स्ट्रेटन इट. हाउ कैन यू स्ट्रेटन इट भाई? दैट इज नॉट पॉसिबल. अगर अपनी एवरेज कोस्ट लाइन बनाओ यार, प्लीज मेक योर एवरेज कोस्ट लाइन. टेल योर हाइड्रोग्राफिक ऑफिस, जस्ट लाइक वी हैव IHO नो, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑफिस. इंडिया का भी हाइड्रोग्राफिक, जैसे हमारा सर्वे होता है. यस, तो सबकी एक एवरेज कोस्ट लाइन बनेगी, वो क्या कहलाएगी? बेस लाइन.
So as per UNCLOS, every country will make a baseline. Is everyone clear? They said your land is your land, you are sovereign in that. Aap malik ho. All laws will apply. True or not? Now UNCLOS says all lands, all waters which lie landward side of the baseline will be called as internal waters. क्या कहलाएंगे? Internal waters. Example, Vembanad Lake. Example, Chilka. Example, Pulicat. ये सब क्या कहलाएंगे? Internal waters, as good as land territory. 100% sovereign. So if a fisherman from Pakistan and his boat is found in this area, a creek in Mumbai, you can ask that fisherman for the documents. अगर नहीं है, that means you have entered India's land. All the laws of India will apply. तो कोई enter नहीं कर सकता. समझ गए? Do we get that? No Pakistani can enter India without valid documents. So same for us, for other countries also. Similarly, you cannot enter my inland water. नहीं वो तो मैं मछली पकड़ते पकड़ते चिल्का में आ गया, मैं तो बांग्लादेश से निकला था. पेपर्स दिखाओ घुसा कैसे? Do we get that? फिर हमारे जो लॉज हैं, टू पनिश देम और टू एक्सपैट्रिएट, उठा के रिपैट्रिएट किया, वापस पहुंचा के आओ, वो भी होगा, सब कुछ होगा, फाइन लगेगा, सब कुछ. People said we understand this, but the fact is if a Chinese submarine comes next to this line, ये तो डेंजरस है ना. I want some buffer safety. तो उन्होंने कहा ठीक है, ये ले लीजिए, आपको रीजन दे दिया 12 nautical mile. A. What is A? A is territorial waters. 0 to 12 nautical mile. What is the unit? Nautical mile, not land mile. Nautical mile is 1.83 kilometers. 1 nautical mile is 1.85 kilometers. 1.85 kilometers. Is everyone okay? 100% sovereign. ये भी आपका है. All laws will apply. All laws will apply. True. That is zone A. इसके अंदर अगर कोई मर्डर होता है, so Indian law will apply. Do we get that? Any crime happens, Indian law will apply. Any smuggling happens, Indian law will apply. Anything wrong, हम apply कर सकते हैं अपना law. इसको पकड़ो और वो करो. But the problem is, हमारा coast guard is standing. हमारा पूरा protection के लिए किसका है ये? Coast guard का काम है. इंडिया के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है. Coast guard is protecting. Their ships are there. ठीक है. अब एक बात बताइए कि a ship or a boat comes here and we have doubt that it is doing smuggling, human trafficking and all that. So what will the Coast Guard do? Coast Guard will approach that ship or boat, establish radio communication with them and say, who are you? What are your intentions? What is your identity? Tell us everything. If you say, I will not, you run away, they will catch you. True. If they don't find the valid cause, reason and document, they will catch you and bring you to land and you will be punished. Do we get that? Punished or tried, whatever is the law. Now the Coast Guard is trying to catch you. बट आपने लाइन क्रॉस कर ली, इधर आ गया और तुम अपनी बोट में बैठ के टिली कर रहे हो. सो व्हाट विल द कोस्ट गार्ड डू नाउ? यस, यू कैन वेरी वेल रीच देयर एंड डू टिली एंड देयर इज नो लाइन आल्सो. यू हैव अ जीपीएस में तो 12 माइल क्रॉस कर गया. सो अनक्लॉस ने कहा ये और ले लो 12, ये जो टिली कर रहा है ना इसको पकड़ लो. दिस इज कॉल्ड बी. दिस इज नॉट योर टेरिटोरियल वाटर. नो, दिस इज नॉट योर टेरिटोरियल वाटर, बट दिस इज अ वाटर इन व्हिच यू कैन कैच देम. हॉट परसूट जोन. जितना ये स्मार्ट बन रहा था, पकड़ो और कान के नीचे जोर से बोलो कि दिस इज बफर जोन, कंटिगुअस जोन, बफर जोन 12 to 24 nautical mile. और ये 0 nautical mile फ्रॉम बेसलाइन है, फ्रॉम बेसलाइन. और ये कहां से है? नॉट फ्रॉम बेसलाइन, सीवर्ड ऑफ टेरिटोरियल लिमिट. नॉट ऑल लॉज विल अप्लाई, पार्ट लॉज विल अप्लाई. सारे लॉज अप्लाई नहीं होंगे, थोड़े से. ठीक है. तो से फॉर एग्जांपल मर्डर इज हैपनिंग नो, बट इफ सम कमर्शियल वायलेशन, टैक्स का वायलेशन, टैक्स चोरी करके गया, आपने जीएसटी नहीं दिया, आपने इनकम टैक्स नहीं दिया, टैक्स वाला तुम पे छापा मारता है, यस नो, एंड देन कैन देयर बी नोटिस अगेंस्ट यू कि जहां मिले अरेस्ट करो. ट्रू. अब तुमको पता है कि मैं अरेस्ट हो जाऊंगा, तुमने पकड़ा एक जहाज, कहां पे आके खड़े हो गए? इधर खड़े हो गए, कैसीनो है इधर, जुआ खेल रहा है इधर, यस नो. कैन आई कैच यू? ये 12 माइल के बाद रखिए मुझे. यस आई कैन कैच यू बिकॉज़ दिस इज अ फाइनेंशियल फ्रॉड. बट इफ अ मर्डर हैपेंस, कैसीनो में तुमने रात को जुआ खेला, उसमें तुम हार गए, तुम्हें गुस्सा आया, तुमने जो जुआ खिला था उसी को गोली मार दी. पॉसिबल. अब क्या करें? Who's to be blamed? अब इधर कंट्री के लॉ नहीं आएंगे बिकॉज यू वर आउटसाइड 12. तो यहाँ पर देखना पड़ेगा किस कंट्री का कैसीनो था, कौन नेशनल मारा गया, एंड यूएन विल आल्सो बी इन्वॉल्वड इन दैट. सो पार्ट लॉज विल बी अप्लाइड. डू वी गेट दैट? बट एनीवन हु इज इवेडिंग इट, उसको आप पकड़ सकते हैं. सो अब यूएन ने एक मुझे बात बताइए, यूएन हैड टू बैलेंस बिटवीन द क्लेम्स ऑफ द लिटोरल कंट्रीज. क्या लिटोरल कंट्रीज के सेफ्टी कंसर्न को हैज यूएन गिवन सफिशिएंट रिस्पेक्ट? 24 माइल तक इंडिया की कोस्ट में कोई और नहीं घुस सकता. ट्रू. So they said, okay, territorial, thank you for this territorial limit. But then I want, economically I have to catch fish. Yes or no? And other resources.
उसके लिए भी कुछ दो, मेरे पास एक्सक्लूसिव होना चाहिए। उन्होंने ठीक है एक और ले लो लाइन, 200 nautical mile from the baseline, 200 nautical mile from baseline is your C. What is C? EEZ, exclusive economic zone. That means if a resource like oil reserve or something that lies within your EEZ, then you have the natural right to exploit it. No country can come and claim that I will be exploiting this. Is everyone okay? कोई और कंट्री आकर क्लेम नहीं कर सकता कि मैं एक्सप्लॉइट करूंगा। पहला राइट किसका है? इट इज योर राइट टू एक्सप्लॉइट। नाउ सपोज यू आर अ डेवलपिंग कंट्री, यू डोंट हैव द टेक्नोलॉजी टू एक्सप्लॉइट डीप सी, you can come in collaboration with some other country, you can share those rights, you can sell those rights, you can get in contract, but this is there. So every country would it want to very clearly claim its EEZ or not? करेगा या नहीं करेगा? करना चाहिए। अब अनक्लॉस ने कहा अगर दो कंट्रीज, इधर श्रीलंका आ जाता है, what if we have Sri Lanka also here? So Sri Lanka is there, will Sri Lanka also claim or not? Sri Lanka भी तो अपना claim करेगा। Whatever India gets, Sri Lanka will also get its zone EEZ. There will be conflict. तो उसके लिए क्या रखा है? Dispute resolution. You can go to the UNCLOS and the tribunals will listen to your plea. They will listen. Get that? इसके आगे का is D. D zone is keeping in mind that principle of Mayor Libram, that after this ocean belongs to humanity. High seas. They belong to humanity. They belong to humanity and they are under the UN as the caretaker. UN is the caretaker. So if any pollution happens, remember part 12 of UNCLOS. Yes, illegal fishing is happening. जैसे जापानीज जाते whaling के लिए, yes or no? They should be stopped. So ये common हो गया. This is collective common for human beings. So if there is pollution happening in somewhere there, that is your claim. You should be. But we are so busy writing our UPSC exam. What happens in Antarctica? मेरे को क्या फर्क पड़ता है? What is happening in Pacific Ocean? मुझे क्या फर्क पड़ता है? That is that. Generally dispute resolution का एक चीज रखा है UNCLOS ने. They said we will take only those dispute in which the parties will promise that we will abide by the decision. True. But we are living in a world might is right. So China, when it comes to China, if I'm talking about China, so this is China. This area is South China Sea. Here we have Indonesia, yes, Philippines, Vietnam, Indonesia, Philippines. They said we have our territorial limit, we have this thing, and we have our EZ. Same for Vietnam, same for Indonesia. हमारे पास भी है. China says, बाहर में गया, this whole belongs to us. South China Sea is Chinese territory. True. Kuchi is saying so why nobody is stopping China and nobody is questioning. So Kuchi, China is also saying Arunachal Pradesh is their territory. भगवान ने मुंह दिया कुछ तो बोलेगा वो. Xi Jinping, he will ping certain things, no? Certain signals will be pinged by him. So he pings there also. ठीक है? जब तक बोल रहा है तब तक ठीक है. As long as he's speaking, that's okay. But if he starts doing nonsense as they did in the case of the Pangong, yes or no? Then that is violation. That is actually inviting war. In these days, warmongering has become so common. Russian example is not a good example. वो ये कह रहा है ताइवान भी मेरा है, ताइवान भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, सब कुछ मेरा है. So Philippines, Vietnam, they approached the UNCLOS and the tribunal. The tribunal called up China. They said yes. Why are you claiming South China Sea? China said क्योंकि मेरे पास माँ है. They said हिंदी movies देखना बंद करो. Tell us why. What makes you claim? Did you not read UNCLOS? The Chinese people said we never attended such and such class. We don't know what is UNCLOS. So they were given that UNCLOS copy. They said we don't know English. They were given a Chinese translation. They read it. They laughed. They said we don't agree. They said why don't you agree? They said historically our ancestors have been fishing in these areas. The South China Sea हमारा है. Historical reasons से हमारा है. So the tribunal said सुनो, तुम्हारे पिताजी ऊपर रह के गए हैं मंगोलिया, चंगेज खान, वो भी अक्सर घूमने निकला करते थे घोड़े पर. ऐसा ना? Genghis Khan also used to, those Mongols also used to go for stroll around, and you were building walls over the Great Wall of China. Should Mongolia claim entire China? No, stupid logic. अभी China. So this is what we are saying, that international laws are powerful only to that extent that the organization is powerful. That is why we say in a democracy, में institution should be powerful. Our judiciary should be very powerful. Our legislature should be powerful. Our executive should be powerful and free of influences. Free of influences. Yes. तो इतना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि like when civil services is a part of our constitution or not. So सेंटर का स्टेट का भी है, सेंटर का भी jurisdiction स्टेट का भी है. Now center is seeking to amend that, yes or no? उनकी ट्रांसफर और सारी चीज सेंटर कंट्रोल करना चाहता है. True, which was given to the state. Now this is a question on parliament. Why the parliament wants to do that? Is it undermining the federal balance? Yes or no? अब ये debatable, definitely debatable. But are we playing with the institutions? No, time has changed. IS को वो करना. Is it a hidden fact? Is it a hidden fact that इसमें IS machinery, the administrative machinery, can be used by the ruling power? Is it not true or not? करेगा नहीं करेगा, the different thing.
Misuse possible है या नहीं? Very much possible. So I want to tell you, there is this temple in Delhi, Akshardham Temple. Akshardham Temple. It was made in the riverbed of Yamuna, which is not allowed. Environmental positions is not allowed. Is everyone okay or not? True. But बना दिया. You know what? They said अरे एक ही तो बंदा एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन देते हैं, लोग ये थोड़ी करेंगे. The bureaucrats were told, बेटा आज जो ये आप साइन कर रहे हो ना, next time if somebody has to do this, he will use this as a precedent. कि देखो पहले भी तो हुआ है, मैं कुछ नया नहीं कर रहा. So that's what I'm saying. So when we are saying, government wants to bring this change with good intention, कल को कोई इसका wrong भी तो use कर सकता है कि नहीं? Think about that. So Sri Lanka India contiguous zone is overlapping. हाँ कर रहे हैं तो क्या हो गया? किधर है यार? इसलिए मैं कह रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से छेड़ने से पहले कंसेंसस जरूरी है, स्पेशली इन अ फेडरेशन. व्हाट विल हैपन इफ श्रीलंकन डू समथिंग रॉन्ग इन आवर टेरिटोरियल वाटर? क्या होगा अगर जो भी करेगा वो तो गलत है ना. उसका हमारे टेरिटोरियल वाटर में ऐसा थोड़ी है कि श्रीलंका में मर्डर अलाउड है, इंडिया में अलाउड नहीं है. यस, श्रीलंका में तो अलाउड है मर्डर, अपने में नहीं है. अब कौन सा लॉ लगाना है? यू वायलेटिंग माय लॉ. भाई मेरे पास तो मेरा लॉ है ना. एक श्रीलंकन फिशरमैन कम्स एंड मर्डर्स, में से पकड़ के ले जाऊंगा कोस्ट गार्ड. ट्रू होगा. तो हमारे फिशरमैन को पकड़ के ले जाते कि नहीं ले जाते? तो हमारे फिशरमैन को श्रीलंका वाले पकड़ लेते. देश ही आया था हमारे एरिया में, फिशिंग कर रहा था. दिस फेलो वाज फिशिंग इन आवर एरिया. द फिशरमैन इज आस्क्ड व्हाई वर यू फिशिंग इन द एरिया ऑफ श्रीलंका? ही सेड सर आई वाज तो फिशिंग. देयर इज नो लाइन. उधर कोई लाइन है क्या? चूना डाल के लाइन बनाई हुई क्या? ये सर ये उनका एरिया. बोला कम ऑन यार, यू शुड हैव सम. हमारे जीपीएस नहीं है. बोला सर लुंगी और बोट दो ही चीज है, उसी में चल रहे हैं सब. लुंगी उठाकर थोड़ा सा देखता हूँ हवा किधर आ रही है, उससे पता चल जाता है विंड डायरेक्शन एंड आई गो फिशिंग. एक नेट है, वो बहुत पुराना नेट है, दादाजी ने दिया था. और आप कह रहे हो मैं श्रीलंका के उसमें आ गया. बिग प्रॉब्लम. कैसे सर मुझे छोड़ दो सर, गलती हो गया सर, आगे से नहीं आऊंगा. चलो छोड़ दिया. नेक्स्ट टाइम अगेन कॉट. देखा पिछली बार तूने कहा था नहीं आऊंगा, इस बार कैसे है? सर मैं नहीं आया था सर, आई डिड नॉट कम इन दैट एरिया सर, माय नेट केम. नेट तो आ सकता है, मैं तो सर बोट उधर ही था, नेट आ गया. सर फिर आपने नेट पकड़ लिया, यू स्टार्टेड पुलिंग इट. सर मेरे पास एक ही नेट, एक ही लूंगी, ओनली वन नेट वन लूंगी. समबडी स्टार्ट्स पुलिंग इट, आई कम अलोंग विद इट. सर फिर से पकड़ लिया. दिस इज सब स्टोरी. पकड़ो इसको अंदर करो, इसकी बोट भी रख लो एंड लुंगी भी रखो और नेट भी रखो. एवरीथिंग कॉट. नाउ द फिशरमैन इज इन द जेल ऑफ श्रीलंका. हिज क्राइम, he was caught fishing in Sri Lankan waters. 1, 2, 10, 50, 100, 200 हो गया. 200 Indian fishermen in Sri Lankan jails. क्या करें? Then comes 15th August. तो सरकार से मैसेज आता है कोस्ट गार्ड को, सुनो भाई कितने अपने उधर? सर 200. कैच देयर 205. 5 एक्स्ट्रा लेकर आ. एंड एज अ गुडविल जेस्चर ऑन 15th August वी रिलीज 205. तब हमने रिलीज कर दिया. सर किस लिए पकड़? अभी जो भी पकड़ के ले श्रीलंकन होना चाहिए, नहीं है तो अपना भी पकड़ लियो, फिगर में हम दिखा देंगे कुछ है. ट्रू. एंड देन वी विल एक्सचेंज. चलता रहेगा. तुम पूछ रहे सर अनक्लॉस आएगा, अनक्लॉस में जाना, पूरा एप्लीकेशन लगाना, मेरा इतना गया उतना गया, आपस में कर लो. $1 billion क्रेडिट लाइन दिया है कि नहीं दिया है? हैज इंडिया गिवन $1 billion क्रेडिट लाइन? जैसे मोदी जी सिग्नेचर करें, भाई ये हो गया $1 billion. यार वो दो चार मछुआरे छोड़ दे प्लीज. हाँ सर छोड़ दूंगा, क्या बात कर, छोड़ दिए. अब अनक्लॉस जाना है क्या? आधे लोग तो क्लास में बैठ के ना एकदम ऐसे पढ़ने लगते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ा रहा है. नो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑन दैट. सर अगर ऐसा हुआ, उनके लॉ और हमारे लॉ मैच नहीं कर रहे, तब क्या करें? तुम बताओ यार. LHS इज इक्वल टू RHS के लेवल के बच्चे जब मुझसे ऐसी बड़ी बड़ी बात करते हैं, yes, nuclear physics wali, so then I have to tell them, okay, normal countries can bilaterally solve things or not, until and unless you have so much love as India and Pakistan, वो bilaterally नहीं कर पाएंगे. तो इंडिया एंड पाकिस्तान में क्या होता है, अगर आप कुछ करोगे bilaterally अगर कर दिया, तो आपको आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बहुत बुरा भला बोलेगी. ये सुनो, अरे ये बेच आया, देश को बेच दिया, इसने ये कर दिया वो कर दिया, बिरयानी खाने गया था उधर, और इधर देशभक्ति कह रहा है. ये सुनो, करो क्या करोगे? रिलीजन एंगल, सारे एंगल लेकर. सिमिलर थिंग फॉर चाइना. चाइना को थोड़ा सा कुछ वो देखे, देखो नेहरू ने ना चाइना देखो पूरा देश बेच दिया उसने. अरे दैट वाज द सिचुएशन वेयर यू आर टॉकिंग अबाउट, यू हैव टू टॉक अबाउट दिस. नहीं 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 नहीं, अभी देखो चाइना 1 इंच भी जमीन हमारे यहाँ नहीं आया. वो अलग बात है, चाइना आके चला गया, सब कुछ कर लिया, 1 इंच भी नहीं आया. बट वो जो नेहरू था वो सब करके गया. वेरी डिफिकल्ट, यस, वेरी वेरी डिफिकल्ट. एंड नॉट ओनली पॉलिटिशियंस, एवरी सुपरस्टार. इस क्रिकेट मैच में हार के दिखाओ विराट कोहली को कितनी गाली पड़ती. एंड स्पेशली बेचारी किसी की शादी होगी उसके बाद, अरे यार जब से शादी हुआ ना इसका सब बर्बाद हो गया. पहले देश के लिए खेलता था, आजकल बीवी के लिए खेलता है. वो इंतजार करिए ड्रेसिंग रूम में, इसलिए जल्दी से आ रहा. that's how cruel we are, that's how patriarchal we are. हमको ये समझ में आता है, because we think हम लोग को भी ये कहा जाएगा. कैसे ना कहना तो यही चाहता है ना, जोरू का गुलाम. That's what we want to say. That's a stupid thing that's gone in our mind. Yes. अच्छा इंडिया में सेफ नहीं, पाकिस्तान क्यों चला जाता? हीरो कैसे बन गया तू इधर? तेरे को मैं बताता हूँ. ट्रू. अपनी कोई औकात नहीं अपना. आई हैव नेवर हेल्प्ड इवन अ सिंगल पर्सन. मैं सोशल मीडिया में बोलने में क्या जाता है? एंड इफ समबडी pays you to do that, तब तो और भी मजा है. आजकल तो पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर ओन ट्रोल्स. ऐसे ना ऑल पॉलिटिकल पार्टीज सोशल मीडिया सेल होती है कि नहीं? उसका काम क्या है? सैलरी दो, क्या टेंशन. अच्छा एक बात बताओ एवरीवन, प्लीज गेट दिस एंड गेट दिस इन द राइट स्पिरिट. UPSC aspirants who wrote this examination could not clear 5 attempts. Now their age is over. Get that?
these young boys and girls and illiterate boys and girls who can be a better social media asset. तो जितने भी लोग फेल होते हैं ना पॉलिटिकल पार्टीज, हाँ भाई क्या कर रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन पता है तुम्हें, ईमेल लिख लेते हो, पोस्ट डाल सकते हो, जॉइन अस, यूपीएससी एस्पिरेंट, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी में ट्रोल आदमी बन सकते हैं, पता है ना, दे हैव रेड ऑल दोस थिंग्स। लक्ष्मीकांत रट के बैठा है, पंडित बात बात पे आर्टिकल 1921 उठा के देके मारता है, सही गलत तो उसे भी नहीं पता है, एमसीक्यूज का सारा बोलता हूं तो यूपीएससी ने बता दिया तेरे को आता नहीं है, बट अधूरा ही आता है ना, देन ओनली हाफ, हाफ की वजह से कुछ भी बकवास करे। सो जॉइन ट्रोल आदमी, कोई दिक्कत? सर थैंक यू सर, मेरे पास तो कुछ नहीं था। सर करोड़ में कमाता है ट्रोल टीम ज्वाइन करके, आई डोंट नो अभिषेक, मुझे नहीं पता क्या कमा रहा है, बट आई एम सेइंग डू यू सी दैट political parties or people with vested interest, even anti-national elements can use this youth power in a wrong direction. That is why we say that youth channelized is a very very big thing. True? तो सोचिए इस चीज को, काम करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, इज एवरीवन ओके? डिस्प्यूट होगा तो कंट्रीज विल बी टॉकिंग अबाउट इट बायलैटरली, और जब नहीं है तो नहीं। Which continent is this? South America, sir. Which country is this? Peru. Which country is this? Chile. ठीक है? So Peru said that this is my EEZ. ऐसा आता है। पेरू ने बोला मेरा EEZ ऐसा आता है, because I am continuing in the line. Chile said no, my line is like this, so my EEZ is this. Do you understand? Chile और पेरू का क्लेम फाइट हो गया या नहीं हो गया? Get that? So Chile wants to claim that line, up to that line is my EEZ. Peru wants to claim this. वो क्या कहता है, वो अपनी लैंड वाले लाइन को आगे एक्सटेंड कर रहा है, बाउंड्री को दे एक्सटेंड। इज इट लॉजिकल? यस सर। दे वेंट टू अनक्लॉज, अनक्लॉज सेड नॉनसेंस, तुम लोग टाइम थोड़ी करो दोनों के दोनों, equidistant from you, this is the boundary, this will be the boundary. Get that, both of you? Peru said thank you, Chile said thank you for resolving the dispute, we are very happy. Okay, Peru and Chile. Similar thing happened China and Philippines. China said बाद में जाओ, मैं नहीं मानता, क्या कर लोगे? That's what we are saying. So resolve हो सकता है, आपस में भी कर सकते हैं. If you have any issues, there are international agencies through those dialogues and through principles of delineation of boundary, they will tell you ये आपकी बाउंड्री होनी चाहिए. Now depends on you. अगर आपको नहीं करना तो आप लड़ते बैठे रहो, कोई काम नहीं है आपके पास। तो चाइना आज की डेट में ऐसा चाहता है। Yes or no? Everyone clear about this? Unclosed clear, लिख लेंगे कुछ भी आया तो। General profile of the ocean, तो ये कैसे पता चला कि नीचे ऐसा है, नीचे ऐसा है, ये कैसे पता चला? एंड 4 जोन्स आपको पता है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, ओशन डीप्स एंड ट्रेंचेस, और इधर क्या कहा? प्लेन्स। 4th बताया था ना। सोनार से पता चला, बैथीमेट्री से पता चला। तो बैथीमेट्री क्या होती है? व्हाट इज बैथीमेट्री? बैथीमेट्री इज सोनार echo sounding, नहीं बेटा, bathymetry is measuring depth. Why do you need to measure the depth? Everyone, why do you need to measure the depth? करना ही क्यों? Do you need to measure the sky? Navigation. राखी मैं यहाँ पे navigate कर रहा हूँ, कोई दिक्कत? Any problem? कुछ ही बोल दे, to know please यार, to know तो सब कुछ है। Ocean exploration. Ocean exploration. अभी तक तो तुम लोगों ने, तो बहुत से लोगों ने ओशन देखा ही नहीं इस क्लास में। Glacier deposits. You don't need the depth for that. So I want to tell you simple thing. जो काम की चीजें वही होता है, सिर्फ नेविगेशन के लिए since time immemorial ओशन की डेप्थ देखी जाती है, और यहाँ पे नहीं ढूंढते हैं, nothing at all, because ship is safe. शिप को प्रॉब्लम कहाँ पर है? shallow water. Mega for our benefit, no benefit mega, only one thing. इसलिए नेविगेशन ऑफ शिप कब से? since time immemorial. Where? coastal shallow waters. कॉन्टिनेंटल शेल्फ भी नहीं मधुकर, वहां भी बहुत पानी है। कोस्टल क्रीक में अब बोट आ रही है, एवरीवन जस्ट इमेजिन, नो, दिस इज द कोस्ट, दिस इज द वाटर एंड देयर इज अ बोट कमिंग। ठीक है, यहां तक तो ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट इफ इट कम्स हियर, यहां पर बोट टकरा जाएगी कि नहीं? विल द बोट कोलाइड और नॉट? अब यहां पर द शिप विल गो अग्राउंड, अब वो फंस गया है, नाउ द शिप इज स्टक, और आपका पोर्ट कहां पर है? पोर्ट इधर है, यू कैन नॉट रीच इट। ठीक है, सो दिस इज अ रिवर, this is the river or the sea or the inlet, and here you have the port. Your boat has to reach that. ये बोट चल के आ रही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि बीच में यहाँ पर बहुत बड़ा shallow patch है। There is a huge shallow patch over there. When this boat is coming and it is invisible, no, because it is beneath water, will the ship get stuck over here or not? यहाँ फंस जाएगा। So what should be the way? ऐसे जाओ और इधर वाले ऐसे आओ, ट्रैफिक लेन ऐसा बना दो ना, रिमेंबर, लेफ्ट हैंड राइट। सो इफ अ शिप इज कमिंग, एक शिप को यहाँ से निकालना है, इसको बोलेंगे सुन तुम इधर से जाओ, तुम इधर से आओ, टाइम भी बचेगा, दोनों बच जाएंगे। ये कैसे पता चलेगा? ओशन बैथीमेट्री से, बिकॉज व्हाई? दिस इज इनविजिबल,
समझ गए? तो ये चाहिए, कहाँ पे चाहिए? जब पोर्ट में हो, क्योंकि आपकी बोट का कुछ डेप्थ होता है बीनीथ वाटर। सपोज योर बोट इज 5 मीटर्स बिलो वाटर, कितना आप कार्गो लेकर आ रहे हो एंड द शिप इज सunk 5 मीटर्स नीचे रहता है, तो कितना मिनिमम डेप्थ चाहिए आपको? हाउ मच मिनिमम डेप्थ इज नीडेड? एटलीस्ट कुछ तो क्लियरेंस नीचे भी रखोगे, 2 मीटर का क्लियरेंस रखोगे, 7 मीटर चाहिए सर। एंड इफ द डेप्थ ऑन दिस इज ओनली 3 मीटर्स देन दिस इज अनसेफ, यस और नो? तो जनरली इस डेप्थ के लिए हम लोग पता करते हैं। कैसे पता करते हैं? कैसे पता करते हैं? सो देयर इज एन ओवरहेड टैंक इन योर हाउस, देयर इज एन ओवरहेड टैंक, ठीक है, उसमें पानी है, पानी होता है ना, ठीक है। अब आपको चेक करना है कितना है उसमें पानी। कैसे चेक करते हो? सौरभ बोला सोनार, अभी देखा सोनार, टैंक लेके गया, टैंक में डाला सोनार। ब्रिजेश बोला वाटर लेवल इंडिकेटर, टशन है यार, मैंने तो देखा सिंटेक्स की टंकी पे कोई पानी का इंडिकेटर नहीं होता। सर ढक्कन खोल के देखेंगे सर, हाथ डाल के देखेंगे, ऐसे ऐसे झांक के देखेंगे, बट वो अंधेरा होता है, ऐसा ना सर? इन्वर्टर की बैटरी में, इवन आपके पेट्रोल टैंक में। सर टॉर्च, बिल्कुल ठीक है सर। सर कई बार ना टॉर्च से पता ही नहीं चलता, ये तो है पानी है बट द लेवल इज नॉट वेरी क्लियर, डज इट हैपन और नॉट? हम क्या बोलते हैं, एक लाठी लेकर आएंगे, स्टिक लेकर आएंगे and we will make it touch the bottom wherever the stick is wet, the part that is wet will tell us yes or no, wooden scale or something anything Himansha will be used or not, उससे पता चलेगा कि नहीं? तो आप क्या करेंगे, बॉटम पे मारेंगे उसको एंड टच करने के बाद देख लेंगे। लोग समझ रहे हैं, आर यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट, और एम आई टॉकिंग समथिंग वेरी एलियन, यू डोंट बिलोंग टू दिस कंट्री? तुमने तो एकदम सीधा सर, वहां पे तो हमारे यहाँ तो मीटर होता है सर, गेज लगा होता है, एक्चुअली उससे पता चल जाता है। कुछ लोगों के पास हो सकता है डिजिटल, सर मेरे पास तो सोनार है, पापा सोनार को भेजते हैं, वो जाता है ऊपर सोनार चेक करके आ जाता है। सर डिजिटल है सर मेरा, पॉसिबल है कुछ लोग। So this is called you are hitting the bottom, तो आवाज आएगी ना, साउंडिंग। तो क्या किया जाता था पहले टाइम में, आप एक बोट लेंगे, यू विल टेक अ बोट, बोट तो ज्यादा गहरी नहीं होती ना, बोट तो इतना ही साइज होता है बोट का, और बोट में क्या करेंगे, यू विल टेक अ रोप और उसमें हैवी वेट लगा देंगे, ऐसे टच करते जा रहे हैं एंड यू फाइंड आउट एंड यू हैव सर्वेड दिस होल एरिया। आपने क्या किया, पोर्ट के पास के एरिया को सर्वे कर लिया। डू यू नो इस सर्वे में कितना टाइम लगेगा, इस पूरे एरिया को, एक रिवर को, इनलेट को, क्रीक को करने में, आज से मेनी मंथ्स लग जाएगा। एंड बाय द टाइम यू फिनिश, ये मिट्टी यहाँ आ चुकी होगी, इट मे कम हियर आल्सो, ट्रू और नॉट? मधुकर इज सेइंग इज इट पॉसिबल टू टेक अ स्टिक एज लॉन्ग एज 1 किलोमीटर? तो मधुकर बोला तो स्टिक नहीं है ना बच्चे, ये क्या है, रोप। रोप तो हो सकती है ना 1 किलोमीटर लंबी, और रोप पे क्या बांधा, स्टोन बांध दिया। जनरली 1 किलोमीटर डीप है तो रोक क्यों रहा है यार, 1 किलोमीटर में तो बहुत सारी डेप्थ है, 1 किलोमीटर में क्यों जाना है? सोचो 6 महीने लगने वाला है, शुड आई गो टू द डीप ओशन? डीप ओशन में तो मुझे खतरा ही नहीं, वेयर इज द डेंजर? डेंजर इज ओनली इन द शैलो रीजंस, नो? तो वहां पे कितना मीटर रोक चाहिए होगा, 20 मीटर, 30 मीटर, इतने में हो जाएगा काम। बट द प्रॉब्लम इज इट इज वेरी स्लो। So oceans are 70% of the Earth's crust. So people are wise. People only used to do sounding, manual sounding for the coastal area. सुमित बोला एंड सर सी माउंटेन, अरे जब होगा सी माउंटेन तब देखा जाएगा ना यार, उतना कोई टेंशन नहीं। एक आदमी मर गया मतलब पूरे ओशन में, इतना बड़ा ओशन, समझ रहे, इतना बड़ा ओशन, 100,000 स्क्वायर किलोमीटर, उसमें एक यहाँ पर आइलैंड है, तुम सारे उसमें घुस के तुम्हारी बोट आएगी यहाँ पर, उस सबमरीन आइलैंड से टकरा जाएगी, मतलब इतना अनलकी तुम अकेले हो। यहाँ सब जगह 4-4 किलोमीटर गहरा है, लेकिन यहाँ पे आइलैंड है, तुम गए उस पर जाके टकरा गए। तुम्हें एक बात बताऊं, अगर ये शैलो होगा ना तो यहाँ पर फिश बढ़ जाएगी, देयर विल बी मोर फिश, बर्ड्स विल बी फ्लाइंग ओवर देयर। तुम तो विजुअलाइज कर ही नहीं, पीपल विल फाइंड समथिंग स्ट्रेंज, दे विल ट्राई टू फाइंड इट आउट। सो व्हाट हैपेंस इफ द स्टोन स्ट्राइक्स द बिग फिश, देन तो मेजर डेप्थ विल बी रॉन्ग। तो पूर्वी कह रहे आपने ऐसे नीचे किया और वो फिश को लग गया, बिग फिश, तो सर हमारा तो रॉन्ग हो गया। सुनो पहले तो फिश आके बजाएगी ना, पहले तो फिश आके बजाएगी, फिर तुम बच गए, तो हाँ ऑब्वियसली रॉन्ग था। ट्रू, किसी मछली को दे मारा, ऐसे वेल जा रही थी ला 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 करते हुए अपने बिटिया के साथ, दोनों यूपीएससी के सेंटर देखने जा रहे थे, तुमने ऊपर से पत्थर दे मारा उसको, वेल ने कहा भी बता दो कौन है। ट्रू, अरे यार अगर मैं डाल रहा हूँ, अब फिर वो वाली बात है ना, यू नेवर साउंडेड एनीथिंग, सो साउंडिंग थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। सो एनीवन हु इज हु नोज हाउ टू साउंड, वो फेक एकोस को हटा देगा, ठीक है, पता चल जाएगा। जब वो पहले डिप मारते हैं, दैट इज नॉट द ओनली डिप, यू विल डिप इट ट्वाइस थ्राइस, तब तक मछली चली जाएगी, नीचे जाएगा, टेंशन ना ले। आधे में तो टेंशन में बैठा हुआ यार, कैसे करें कैसे करें, बट देन मैनुअल साउंडिंग इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, वेरी स्लो, कुछ ऑटोमेटिकली। बट इन द वर्ल्ड वॉर सोनार वाज डेवलप्ड, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सो जैसे आपने एको इफेक्ट सुना है, यू शाउट एंड द एको कम्स बैक, पता है माउंटेन वैली में, सो यू आर हियर, यस, एंड दिस इज द माउंटेन एंड यू साउंड बाबू सोना गोज लाइक दिस, थोड़ी देर बाद वापस आती है बाबू सोना बाबू सोना बाबू सोना, यू फील वेरी हैप्पी, तू नहीं तेरी आवाज ही सही, ऐसा ना? So all those stupid things will happen. But the time taken from your Babu Shona to go over there and that Babu Shona to come back, that time the sound has traveled distance d and distance d 2d, and can you monitor the time upon time? Yes, time नहीं करना बल्कि 2d हो गया, आप क्या करो,
आपके पास टाइम है इनटू स्पीड, टाइम इनटू स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड है ना, स्पीड ऑफ टाइम दिस थिंग, सो दैट विल गिव यू द डिस्टेंस, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, यू डिवाइड द डिस्टेंस बाय 2, that will give you the range. Is everyone okay? Echo method समझ में आ गया? Is everyone clear? So similar thing is that we have a machine, we have a ship. At the bottom of the ship we have a machine or a transreceiver, transponder, transreceiver. Transreceiver will do what? First it will transmit the sound waves. Sound waves will collide with the bottom and they will come back just like an echo. Receiver will catch them. It will note the time into 343 meter per second. इतना टाइम उसने सेकंड्स में लिया to come back. This thing, this gives me the distance, but this distance is going and coming. So distance by 2 is equal to the depth. Is everyone okay? The only thing is now you don't have to go and take the rope जिसमें फिश को मार रहे थे तुम. Remember, फिश बेचारी की कमर तोड़ दी तुमने. Such inhuman, animal right violation, human animal conflict. Yes, many things can be there. Endangered species के सिर पे पत्थर दे मारा. Possible. Yes, छोटी सी मछली मर गई. श्राप देके मरी. जा तेरा कुछ नहीं होगा. जितना मर्जी पीटी देना है ले ले. Possible. अब you are saved. You have a boat which is transmitting automatically, and how many pulses per second automatic. जल्दी हो जाएगा कि नहीं? Now what will happen is now you can scan an area faster. So धीरे धीरे आपको पता चलेगा अच्छा यहाँ तो एकदम फ्लैट है लेकिन इधर एक हिल है. Okay, do we get that? So ऐसा ओशन का बॉटम प्रोफाइल दिख जाएगा. किसने किया ये? Who helped us finding this out? Sound machine. It is working on echo principle and it is using sound also. So this is called echo sounder. ठीक है, आपने वीडियो देखा echo sounder का तो इस तरह से. अब मैं आपको बताना चाहता हूँ जो कि अभी पूर्वी ने पूछा, अगर यहाँ मछली आ गई, पॉसिबल ना, a shoal of fish is coming. Yes, तो हो सकता है यहीं से रिटर्न भी हो जाए. So we will find a wrong echo also coming. Wrong echo also will come, but trust me, this echo will be weak, this will be strong. So a trained user knows what is there. तो आपको तो यूज करना नहीं, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए, हमें तो पता है ना. अब होता है ऐसा, see I know I'm in the, पहली बात पहले तो मैं आपको बता दूं इसका रियल हो क्या, because I have used so many echo sounders. First of all, echo sounders को हम जनरली 50 से 60 मीटर की डेप्थ में यूज करेंगे. 50 to 60 मीटर डेप्थ में काफी है. इट इज मोर रिलायबल. इनफैक्ट 200 मीटर की डेप्थ के बाद तो echo sounder is not reliable. वो कहीं से भी रिफ्लेक्ट होकर आ जाएगा. डीप सी में तो हम echo sounder को बंद ही कर देते हैं where it is 4 किलोमीटर डेप्थ. वो कुछ भी रैंडम रीडिंग दे रहा होता है. Do we get that? Only in the coastal areas we are doing that 50, 60, 100 meters तक reliable. And depending upon what it paints, I can tell you whether this is a real echo or a wrong echo. और कई बार पता क्या होता है, echo sounder का पेपर है ना, तो यहाँ पर वो दिखा रहा है डेप्थ ऐसा है. So depth is how much? Say 30 meter. It is showing like this. And then you know what will it show? It will show like this. Two graphs will come. And then, so did you understand why two graphs are coming? This part was a false echo. यहाँ पर कुछ false echo हो रहा था और ये real था. तो anyone who has used the echo sounder would know how to find it out. So you don't have to worry about it. आपको मैंने बता दिया, टेक्निक पता होनी चाहिए. So we have the continental shelf. कितना होता है? Continental shelf is the seaward extension of the continent. मैंने आपको बताया था 200 मीटर. अगर उसको fathom में देखा जाए तो fathom is a unit. 1 fathom is 6 feet. fathom में 100 fathom और 200 meters होता है. ठीक है, कितना area of oceans is continental shelf? ये याद रखना है डेटा. 7.5% of the oceanic area is continental shelf. Continental slope is 8.5%. Yes, is everyone okay? अच्छा, ये इनकी स्लोप अलग होती है. रिमेंबर, दिस इज जेंटल स्लोपिंग एंड दिस इज स्टीप स्लोपिंग. इसका स्लोप होता है 1 to 2 डिग्रीज, इसका स्लोप होता है 2 to 5 डिग्रीज. इज एवरीवन ओके? ये भी याद रखना है, डेटा टू बी रिमेंबर्ड. समटाइम्स दे आस्क यू द डिफरेंस. So continental slope and continental shelf are both part of the continental margin. Is everyone with me? What are they? They are a part of the continental margin. पहला तो ये समझना है. Yes sir, they are part of continental margin. ये 200 meters तक है या 100 fathom, ये 2000 fathom तक है. So this is deeper and this marks the end of continental block. So what marks the end of continental block? कहाँ पे खत्म होता है? स्लोप पर खत्म हो जाता है. ठीक है. Now have you heard of Piedmont Plateau? Have you heard of Piedmont Plateau? Piedmont क्या होता है? Foot of mountain होता है ना, because of the sediments depositing at the foot of the mountain. Now imagine this is the shelf. This is the slope and sediments are there. Sediments are coming and they are rolling down. Will they pile up here or not? They will pile at the bottom. Yes. So at the bottom of the shelf we have something called as continental rise. 0.5 to 1 degrees. They are in the abyssal plane. They are between the slope and the abyssal plane. They are created because of deposition. ठीक है. Continental margin से जो deposition आए वो यहाँ पर deposit हो जाते हैं. And after this comes what? The abyssal plane. Abyssal plane. ये deepest है. In fact, 80% of the ocean bottom is abyssal plane. Average depth, I told you 3.8 meters, so 3 to 6 kilometer deep ये होता है. Everyone with me? कोई question है तो बताओ. Macro units आपको बता दिए गए. I just told you the macro units of the oceans. Any questions? Please ask. ठीक है. ये डायग्राम जो मैं बना रहा हूँ ये सविन सिंह से बना लेंगे. सविन सिंह और any book. Please make that. Ocean bathymetry. Question has come. Question has come. Examine the
bathymetric techniques. Previous year question. अब दिस नॉट एक्सपेक्टेड, ये क्वेश्चन नहीं आना चाहिए यार, बट आ जाता है, तो आ जाता है इसलिए पढ़ा भी देते हैं, क्योंकि आपके लिए इतना जरूरी नहीं है सच में ओशनोग्राफर के लिए। तो पहला क्या है, ओरिजिनली वाज मैनुअल साउंडिंग, वेयर वेरी लिमिटेड एरिया। उसके बाद क्या आ गया, एको साउंडिंग अप टू कितना मीटर डेप्थ, 200 मीटर डेप्थ। सर उसके आगे व्हाट अबाउट द डीप ओशंस? फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नीड द डीप ओशंस डेप्थ, but there is an indirect method. What is that? So do you know this is the ocean bottom? हिमांशु क्या होता है लीडार? What is लीडार? मुझे भी तो पता चले लीडार होता क्या है। So everyone, this is the bottom surface. It's a light wave की हेल्प से, हिमांशा साउंड वेव की हेल्प से जो हो गया, वो लाइट वेव क्यों मारना है? लाइट तो वैसे भी ओशन में नहीं जाती है, ओशन का बॉटम तो अंधेरा होता है, आप उसमें जबरदस्ती लाइट मारोगे और मार के भी तो यही करोगे, मार के भी तो यही करने वाले हो, मेथड तो सेम ही है, जैसे नया वाला मत मारो। एवरीवन, you know what, this is the ocean bottom and this is the surface. Can I say molecules on the surface? Molecules on the surface are equally pulled down by gravity, force of gravity. Yes, but it has been seen when the ocean bottom is non-uniform, so the gravity is also non-uniform. Do you get that? Gravity is not, क्योंकि कुछ ज्यादा है कुछ वो है, so what will happen is the ocean water will also mimic the bottom little bit. ऐसा नहीं कि ऐसा ही बन जाए, it will look flat only, but वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, because of this it will be like this. Do we get that? It will look flat but it has got disturbed because of the bottom, not exactly the same amount but थोड़ा unevenness आ गया. Do you understand unevenness? A satellite in the sky can capture this unevenness, and from the surface unevenness give us a map of bottom. True? Tell me exact or approximate. Exact map or approximate? Approximate, because satellite अंदर तो नहीं जा सकता, but from the surface mimic they can tell something about the bottom. This is called satellite imagery. Is everyone okay? अब ऐसा पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है, so it is suggesting that there is a huge mountain over there. So यहाँ पर आकर आप क्या कर लो, क्रॉस वेरीफाई करो, क्रॉस वेरीफाई using what? Echo sounder. This is the quickest. This can cover wide area. True or not? The only problem is approximate. Now everyone, I always tell my students who want to read Hindu newspaper, do not start reading the Hindu newspaper from line 1. First spend 5 minutes in scanning the newspaper, what is important, what is not. Do you see satellite can scan? Satellite will scan everything. Quickly the ocean can scan. Get that? After that what you do? Achha, this area, this article is good. This is good for civil services. This will help me in environment. This is good for economics. Similarly, this area is a cause of concern. यहाँ पे थोड़ा सा हाई लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा लो लग रहा है, yes or no? वहाँ पर क्या कर लो, एको साउंडर से सर्वे करवा दो. एको साउंडर सर्वे is slow, yes or no? But it is pure. क्रॉस वेरिफिकेशन है. सर ये कर क्यों नहीं? अभी आपने कहा, everyone, I want to lay a submarine pipeline, submarine telecommunication pipeline. Will I prefer such flat area or will I prefer these area? Flat area or this area? So flat area, total internal reflection is needed. Sir, I have optical fibers. You can't bend them too much. Yes or no? I want a submarine oil pipeline. बना रहे हैं, बीच में mountain है, तो survey will it help or not? Will it help? अच्छा, एक एयरक्राफ्ट था, वो उड़ते उड़ते पानी में गिर गया. अब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, वो जो वीडियो आपके साथ शेयर किया है, that is looking for an aircraft. तो उसके डेब्रिस कहीं पर नीचे हैं, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कहाँ होगा. Will the satellite quickly tell me something and then I can check that. सबको बैथीमेट्रिक टेक्निक समझ में आई कि नहीं आई? मैनुअल, एको साउंडर, सैटेलाइट इमेजरी. Do we get that? हमें ये भी पता चल सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी फिश है. Too much of fish over there. There is a shoal, fishing bank. Make sense or not? अच्छा, कैसा है यहाँ पर? यहाँ पर एक hard area, hard rocks are there. So a ship has come and ship wants to drop the anchor. If it drops the anchor on the hard area, will the anchor be damaged? What does it want? It wants a soft, sandy, gravelly area जिसमें anchor will go and dig and stop inside. तो आप अपने anchoring ground, anchorage identify कर सकते हो. Fishing grounds can you encourage? Search and rescue can you do that? Can you do for economic? रेकी करना है आपको, कहाँ पे पाइपलाइन करना है and everything. See, you never thought like this. Practical uses I'm talking about. Quickly scan with the satellite, cross verify with echo sounder and this thing. बच्चों ये सब गैस है, नीचे है क्या ये थोड़ी पता है. मतलब there is something but I don't know what exactly is it. तो उनका ठीक है, let us do one thing. They have created now submersible vehicles. उसमें कैमरास होते हैं.
आप कैमरा भी भेज सकते हो, सबमर्सिबल व्हीकल विल गो, अनमैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल विद कैमरास इन द फोटिक जोन, इट विल टेल यू अच्छा यहाँ पर ये फिश है, वो फिश है, यहाँ पर ये, ठीक है। वो जो भी कोई बात कर रहा था डीप ओशन मिशन, उनमें बहुत सारे सबमर्सिबल यूज करेंगे, ठीक है। कई बार आपने पुतिन को देखा होगा सबमरीन की जगह वो फोटो खिंचवा रहे, एक सबमर्सिबल में छोटा सा होता है उसमें अंदर जा रहा है, पुतिन ऐसे टशन वाले फोटो लेते हैं। कभी मोदी जी लेते हैं ना टाइम पे, नहीं मोदी जी ने नहीं लिया, मोदी जी का अपना स्टाइल, वो भी अपने एरिया में ले लेते हैं। मोदी जी तो आपको पता है फोटो सेंसिटिव हमेशा ही रहते हैं, जगह पे वकील आनी चाहिए, सो दैट इज व्हाट दे आर। सो कई बार ये हो जाता है कि आप अपने नेता को देखकर कई चीजें हेल्प कर लेते हैं। सर मोदी जी विद पीकॉक वाइल पुतिन विद बियर, हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छी बात है। एनिमल फ्रेंडली भी है, तो सब अच्छी बात है ना, ऐसा होना चाहिए। कई चीजें आपको समझ में नहीं आ रही, आपने देखा आपका नेता उधर था तो बहुत बढ़िया। यस, सो मेनी स्टूडेंट्स डोंट नो व्हाट इज रिवर नेविगेशन। सो मोदी जी जब राफेल खरीदने गए पेरिस में, तो पेरिस में रिवर्स पे बोट्स पर थे, ऐसा, तो आपको रिवर नेविगेशन समझ में आता है। कई चीजें आप अपने नेताओं से देख सकते हो, अभिनेता से देख सकते हो, यू शुड लर्न फ्रॉम। तो ये सैयद ने भेजा, क्यों भेजा है मुझे पता नहीं, बट एक फोटो खींच के भेजी उन्होंने, और उन्होंने कहा सर प्लीज हेल्प मी विद दिस डाउट। सो ऐसा आपको नीचे दिखने लगता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये आपकी सैटेलाइट पिक्चर से यू कैन फाइंड आउट, बट एक्जैक्टली कहाँ डेप्थ होगी, कहाँ ट्रेंच होगी, वहां जाके पता करना पड़ेगा। इज एवरीवन ओके विद द टेक्निक्स? The Deep Ocean mission aim to explore deep oceans for resource development, technology and support of blue economy. हाँ तो अच्छी बात है ना, करना चाहिए। इंडियन ओशन में बहुत सारे रिसोर्सेज है, हमारी EEZ है, उसमें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स हैं, अदर थिंग्स आर देयर, वी शुड गो विद दैट। व्हाट डू वी टॉक अबाउट द ग्रीन ब्लू इकोनॉमी, ब्लू नेवी एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सारी चीजें ओशन बॉटम में पता होनी चाहिए। बट देन एज आई सेड, हर एक चीज पता करने की जरूरत नहीं, क्रिटिकल एरियाज यू शुड नो। बाकी सैटेलाइट अल्टीमेटली विल टेल यू द ब्रॉड कंटूर्स। एवरीवन विद मी, आगे बढ़े। टेक्निक्स जो लोग अभी सोच रहे हैं यार ये तो ठीक है सर ने लिखवाया कुछ नहीं, बेटा यहाँ पे है बैथीमेट्री क्या होता है, मेजरमेंट ऑफ द शेप, टोपोग्राफी। द स्टैंडर्ड यूनिट इज फैथम, एक फैथम कितना होता है, 1.8 मीटर होता है, ठीक है। फर्स्ट साइंटिफिकली डिवाइस्ड बैथीमेट्रिक ओशन वाज इनिशिएटेड, रिमेंबर चैलेंजर, कितने 200 साइंटिस्ट पहुंचे थे उधर। बैथीमेट्री वाज फर्दर एनरिच्ड बाय एको साउंडर, बाद में क्या आ गया, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एको साउंडर आ गया। फर्स्ट यूज इन मीटियोर एक्सपीडिशन। तो पहले चैलेंजर वाले क्या करते थे, मैनुअल साउंडिंग, ठीक है ना। 200 साइंटिस्ट किस लिए लेके थे, चलो भाई तू भी रस्सी पकड़ जल्दी से बताओ, उनका ही काम था, ठीक है। मीटियोर एक्सपीडिशन में ये आ गया। एंड अंडर सी माउंटेन रेंज वाज लोकेटेड इन सेंट्रल साउथ अटलांटिक ओशन, तब जाके मिला 1925 में। सोनार वेव समझ में आ गया, इस तरह से करते जाएंगे। सो दैट इज दैट, डायग्राम भी है। ओशनोग्राफर्स वर सरप्राइज्ड, पहले तो सोचते सब फ्लैट था, लेकिन जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो बहुत, बल्कि डीपेस्ट पार्ट अकर्स नियर लैंड। रिमेंबर trenches actually occur at the boundary of the continent. We thought the deepest will be in the center of the ocean, but trenches is there. So when I will teach you plate tectonic subduction, that is where it happens. So that is also understandable. A mountain range runs through every ocean basin, that is called the mid-oceanic ridge. Submarine volcanoes are there, they are almost in a line, that means something is happening. बहुत सारी चीजें ओशन बॉटम ने बहुत ज्यादा वो किया। Do you know what? एक क्वेश्चन आया, बहुत से लोग छोड़कर आ गए। How did acoustic studies help in understanding sea floor spreading? ये क्वेश्चन है PYQ 2016 या 17 का है। Many people gave up because they thought ये acoustic study तो किसी ने पढ़ाया नहीं। हाँ नहीं पढ़ाया यार, साउंड तो पढ़ाया था। If you don't know this much English, how did sound help in understanding sea floor spreading? Come on यार। Acoustic means manual, क्या बात कर रहा है सौरभ, इसीलिए बच्चे वहां तड़प गए। Acoustic sound होती है भाई, अभी भी होगा। Acoustic means manual। acoustics यार, acoustic तो स्कूल में भी नहीं पढ़ते। acoustic बात अगर आप खरीद रहे हो तो यार, एक टीवी खरीद रहे हो, साथ में वीडियो गेम खरीद रहे हो, उसमें acoustics नहीं आता, बोला acoustic means manual। भाई थोड़ी तो अंग्रेजी पढ़नी पड़ जाएगी फिर तो। acoustic गिटार, बिल्कुल सही कह रहा हूँ वैसे, मैनुअल। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा और यूपीएससी पढ़ने के लिए रिलेट करो रियल वर्ल्ड से, नहीं तो वैसे ही होगा। सर अगर इंडिया के लॉ अलग है, श्रीलंका के लॉ अलग है, किसका लॉ माना जाएगा? किसी का नहीं माना जाएगा, जिसका डोसा बढ़िया उसका माना जाएगा। देयर इज नो लाइटर साइड टू इट। ह्यूमर तो मर चुका है, विजडम भी जा चुका है। अकूस्टिक का मतलब हमें नहीं पता है, गर्व है यार। पूर्वी बोले क्यों छोड़कर आए, हिंदी वाला पढ़ लेते। पूर्वी रहने दो, जो हिंदी वो लिख रहा है ना, वो बेचारा हिंदी वाले की समझ नहीं आ रही। और जब अपने पे आती है ना पूर्वी, तब पता चलता है दूसरे को कहना इग्नोर कैसे छोड़ दिया। अभी आपने देखा वन स्टूडेंट थॉट दैट अकूस्टिक मींस मैनुअल। यस, तो क्वेश्चन है एग्जामिन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टील प्लांट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, और वो आंसर लिख रहा है, हिंदी में लिख रहा है इस्पात का पौधा, इस्पात के पौधों के वितरण के बारे में बताएं। एंड यू वंडरिंग में कौन सा पौधा लगा दिया है। स्टील प्लांट को हिंदी में लिख रहा है इस्पात का पौधा, हिंदी इज इस्पात संयंत्र। बट दैट फेलो हिमसेल्फ हु हैज क्वालिफाइड फॉर यूपीएससी, ही इज फ्रॉम हिंदी मीडियम, उसके पास इतनी भी सोच नहीं है। स्टील प्लांट मींस इस्पात संयंत्र, ही सेइंग इस्पात के पौधे। कौन सा पौधा भाई? सच, गोभी का फूल। तो कहां से करते हैं ये वाला ट्रांसलेशन? गूगल से। ही हिमसेल्फ डजंट नो इंग्लिश जो ट्रांसलेट कर रहा है। जनरली अ गुड ट्रांसलेटर नोज बोथ द लैंग्वेज, बट ये लोग जो क्वालिफाई होते हैं, ये रैपिड एक्स पढ़ के क्वालिफाई हो गए किसी तरह से। रिमेंबर इंडिया में डिग्री तो मिल जाती है, यूपीएससी में गड़बड़ करता है, इस्पात के पौधे लिखता है। बिग चैलेंज और नॉट।
सो और क्या था बहुत सारे यार, ऐसे में तो इन्होंने बहुत सारा बात किया, ऐसे में तो पूरा मतलब ही बता दिया है, मतलब ही चेंज कर दिया है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा कौन सा था। दिस वाज हाँ, क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम। यस, ये यूपीएससी का ऐसे टॉपिक है, क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम, इसके मेरिट्स या डिमेरिट्स पूछा था, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो व्हाट इज क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम, मतलब क्या है इसका? डिस्कस द प्रोज एंड कॉन्स, समथिंग लाइक दैट, ऐसे टॉपिक है, चेक कर लेना, यूपीएससी में है, शायद 2014 या 15 में। क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम, व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम? क्विकली, जिन लोगों ने हायर एजुकेशन लिया है, प्रियंका, जिसने पढ़ाया उसको क्रेडिट दो, यू नो, रिस्पेक्ट टू टीचर्स। वाओ। किसी ने कहा सर लोन बेस्ड एजुकेशन, लोन लोन लोन। सर दिस इज अबाउट एक्सपेंसिव एजुकेशन। वेरी गुड, ठीक है। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, यूजीसी वाज कंसिडरिंग रिफॉर्म इन यूनिवर्सिटी एजुकेशन। मधुकर बोला प्रीवियसली रिकॉर्डेड, ये कितना अच्छा है, रिकॉर्डेड वीडियो सर, प्रीवियस रिकॉर्डेड वाला। कुछ भी सोच सकता है ना उस दिन आप लोग, और यूपीएससी देने जा रहे हो तो शामत आ जाएगी। यूजीसी वांटेड टू हैव अ रिफॉर्म, तो पहला उन्होंने लगाया सेमेस्टर सिस्टम। हैव यू हर्ड सेमेस्टर सिस्टम इन द यूनिवर्सिटी? व्हाट इज सेमेस्टर सिस्टम इन द यूनिवर्सिटी? नॉट द एग्जाम एट द एंड, दे सेड यार बीच में होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा एक सीजीपीए होना चाहिए। सीजीपीए मींस क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट सिस्टम। सीजीपीए मिलता है कि नहीं मिलता है? तो ये यूपीएससी के रिफॉर्म्स थे, यूपीएससी ने वो किया। तो अब इसका पूछा गया था क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये टॉपिक था। अब सोचो यहाँ पे स्टूडेंट क्या पढ़ रहा है इसको, जिसने पढ़ाया उसको क्रेडिट दो, रिस्पेक्ट टू द टीचर, ये जो लिख कर आया, समझ रहे हो? उससे मतलब पढ़ने वाले को कितना सदमा लगेगा, ठीक है। दूसरा वाला जो हिंदी वाला जो ये लिखेगा, लोन एंड एक्सपेंस, क्रेडिट बेस्ड मतलब बैंक लोन, ठीक है। टॉपिक तो ये था भाई, सीजीपीए पे था कि आजकल क्रेडिट रेटिंग सिस्टम, इट इज मोर अबाउट रेटिंग सिस्टम, वो इंडिया में आना चाहिए नहीं आना चाहिए, वेरी सिंपल था। अब जिसने इसका हिंदी अनुवाद किया, डू यू नो व्हाट वाज हिंदी इन दिस? हिंदी वाज ऋण आधारित उच्च शिक्षा व्यवस्था। व्हाट इज ऋण? लोन बेस्ड। अब हिंदी में लिख के दे दिया ऋण आधारित उच्च शिक्षा व्यवस्था, डज इट चेंज? एंड देयर वर मेनी स्टूडेंट हु रोट ऑन लोन एंड दे डिड नॉट गेट मार्क्स। तो वो लोग जो बोल रहे हैं सर हिंदी में पढ़ लेता, छोड़ के कैसे आ गया, आप सोचो तो सही। मेनी ऑफ यू आर सिटिंग ओवर हियर, किसी को भी एक ख्याल आया क्रेडिट बेस्ड हायर एजुकेशन सिस्टम मतलब जिसने पढ़ाया उसको क्रेडिट दो? मेरी माँ, मुझे मेरी माँ ने पढ़ाया, मुझे मेरी गरीबी ने पढ़ाया, मुझे मेरी प्रकृति ने पढ़ाया, ये लिख कर आने वाला है। एग्जामिनर ने सोचा भाई कहाँ से लिख रहा है, क्या लिख रहा है, हुआ क्या इसको, क्या खा के आया था, क्या सुन के आया था, व्हाट इज दिस पर्सन ऑन। कभी की कल्पना। अगेन सेइंग, फिर से बता रहा हूँ, कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ, सिचुएशनल अवेयरनेस। सर इज इट फेयर टू स्टूडेंट्स इफ वी हैव नॉट एग्जैक्ट वर्ड? मधुकर हुसैन यूपीएससी इज फेयर, केस कर दो। ये बात हुई थी इस्पात के पौधे पे भी, पार्लियामेंट में भी बात हुई है। एक और अभी आया था सोशल इंक्लूजन पे आया था, where parliament में I think Shashi Tharoor had raised that question in the parliament, that UPSC has asked this question which can be interpreted in two ways. So please UPSC should be requested to give marks to both the categories. अब किसके पास कोई चेकिंग है? जिसने कर दिया कर दिया। So how can we tackle these type of questions? छोड़ दो, चॉइस होती है, तुम्ही को शहादत देनी है, तुम्ही को शहादत देनी है, there are choices। ऐसा जब तुम्हें डाउट है तो छोड़ दो ना, तुम्हें ऐसे लिखना है जो समझ में वही लिखोगे कि नहीं लिखोगे? नहीं सर मैं थोड़ा सर हिंदी वालों के साथ नाइंसाफी है, उसके पास भी दूसरा टॉपिक था, ऐसा थोड़ी था कि हिंदी को इसी पे लिखना है, दूसरा टॉपिक लिख दो। चलिए टेक्निक्स ऑफ बैथमेट्री में बताया था, प्रेजेंस ऑफ मिड अंडर माउंटेन्स हैव बीन नोन। एको साउंडर सबको समझ में आ गया। एको साउंडिंग हाउएवर लैक्स डिटेल, बहुत ज्यादा डेप्थ हो जाता है तो नहीं कर सकते। आजकल एको साउंडर क्या आ गया, मल्टी बीम एको साउंडर, साइड स्कैन सोनर। ये जो वीडियो आपके पास भेजा था, आपने देखा था, उसमें छोटा सा ट्रेल करके उसने साइड वाला भी बनाया, एक तो वर्टिकल मारता है, साइड वाला भी मारता है, सो दैट इज व्हाई आई सेड दैट। और अकूस्टिक सीस्मिक प्रोफाइलिंग, जब आपने सारा का सारा सर्वे कर लिया, व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द होल सर्वे विद द एको साउंडर, देन यू क्रिएट अ मैप। कौन सा मैप बनेगा? जो मैंने बनाया था, ये जो मैंने नीचे बनाया ना, दिस इज कॉल्ड अकूस्टिक सीस्मिक प्रोफाइल। ये क्या है? अकूस्टिक प्रोफाइल, सीस्मिक प्रोफाइल। ये तो मैंने हाथ से बनाया, उधर कौन बनाएगा? कंप्यूटर विल मेक दैट। सो इज एवरीवन विद द फर्स्ट टेक्निक? First technique is very difficult. Second technique is echo sounder. With echo sounder, you can do many things. Multi beam is there, side is also there, and finally you can from the space. Answer lies in the fact that the sea floor features directly influence Earth's gravitational field, and उस वजह से there is mimicking of the relief of the ocean floor. Who does that? Surface bulge करती है, surface looks like the ocean floor. Satellite can detect it. Even 4 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे हुआ वो पकड़ लेगा सर, लेकिन वो तो वेव से भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, सो वो उसको करेक्ट करेगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ वेव, टाइड एंड करंट, सैटेलाइट विल कैंसिल इट आउट एंड देन गिव यू एन अप्रोक्सीमेट थिंग। व्हाट डू वी कॉल इट? सैटेलाइट अल्टीमेट्री। और इस सबसे हमें
फ्लैट नहीं है, देयर आर सी माउंट्स, ओशियनिक आइलैंड्स, ट्रेंचेस, वोल्केनिक, एवरीथिंग इज देयर, ठीक है। सो टुडे प्लीज गो बैक होम, हैव अ लुक एट दिस, और यहाँ पे कुछ स्लाइड्स हैं अबाउट द ओशन बॉटम, सबमरीन रिज, एबिसल हिल, सबमरीन ट्रेंच। ये सारा राइट अप कहाँ पे दिया हुआ है? एनसीईआरटी क्लास 11th चैप्टर ऑन ओशनोग्राफी, विल यू रीड दैट? उसमें ओशन बॉटम को प्लीज कंप्लीट करें। ये होता है हिप्सोग्राफिक कर्व, प्लीज ड्रॉ अ हिप्सोग्राफिक कर्व, आई विल एक्सप्लेन दिस कर्व टुमारो, get that? And one ocean, ये देख रहे हैं 15 points of Atlantic Ocean are there as a sample for you. If I had to write on Atlantic Ocean, what will I write? This is a sample for you. Ocean का bottom ये हमने कहाँ से लिया है? ये NCERT से लिया है। ये मैप बनाना आना चाहिए, बना लेंगे तो अच्छी बात है, otherwise I'll help you make it in the class also tomorrow. Bottom relief of Atlantic, what is there? So please read Atlantic Ocean. Your homework is Atlantic Ocean chapter on ocean bottom relief from NCERT and my handout. Handout will be, ये handout क्या है तो इसी पे उतर सकता है, you can get a PDF on the slides. Everyone okay? So I've extended the class by half an hour. I'm sorry, but ये topic बीच में नहीं छोड़ सकते थे. That is why. So tomorrow we will go individual ocean wise and we will complete that. Sir, a topper recommended NOAA's book. Is that necessary? Sumit, it is not necessary. First complete NCERT. जब वो कर देंगे तो NOAA आ जाएगी. और टॉपर क्या recommend कर रहे हैं, आप किसकी सुन रहे हो, अलग बात है. Sir, please upload yesterday's handout. Okay, Rafi, I will upload that also. Everyone okay with this? So thank you. See you tomorrow. And people who are in the evening batch, I'll be talking about GS areas. I think today we are talking about energy resources. We will have the energy resource. Whatever lamp you have, अपने छोटे लैंप को जला के रखो. That is enough to clear this exam. If you can't see the big picture, see what I'm showing you every day. Don't miss the classes. Connect them. ठीक है? आज भी environment class नहीं है. ठीक है? Thank you. Bye bye. People who have joined in new, पिछला एक lecture करते रहिए. One lecture every day.